नमस्कार। हेल्थ फॉर ऑल आज 19वें एपिसोड में प्रवेश कर रहा है। हील फाउंडेशन की अब तक की कोशिश रही है कि हम देश के लोगों को आज सेहत के एपिसोड में जागरूक कर रहा है, क्योंकि लोग स्वस्थ रहे हील फाउंडेशन की तमाम बड़े डॉक्टरों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर इस काम को अंजाम दें। हमारा ये प्रयास आज निरंतर जारी रहेगा। कोविड महामारी के इस दौर में हमने कोविड प्रबंधन के लगभग सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया और डॉक्टरों के विचार जाने। हेल्थ फॉर ऑल में दूसरी बीमारियों के बारे में भी लक्षण, बचाव और उपचार पर डॉक्टरों को सुना। योग और खान पान संबंधित जानकारियां भी विशेषज्ञों ने हमारे साथ शेयर किए। तो हमने सोचा क्यों ना उन महत्वपूर्ण जानकारियों का एक रिकैप हो जाए। आज के एपिसोड में हम अब तक के 18 एपिसोड्स की हाइलाइट्स को आपके सामने रखेंगे, जिसका आप लाभ उठा पाएंगे एक साथ। आपको ये बता दें कि हमारा ये शो फेसबुक और यूट्यूब पर अगले 3 घंटे तक लाइव देखा जा सकता है, लगातार और बिना ब्रेक के। तो सबसे पहले ये राउंड ऑफ वीडियो देखिए। नमस्कार। हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज हम उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोग कम बातें करते हैं। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और समाधान। And we have with us Dr. Pooja Pandey, a certified yoga teacher, an expert in creative spirit behind her successful YouTube channel called Arogya Physio Tips. She'll be demonstrating asanas for patients with PCOS or polycystic ovary syndrome and PCOD or polycystic ovary disorder. अगर आप PCOS में कंसिस्टेंट नहीं है तो मतलब जीतना PCOS के अगेंस्ट, मैं जीतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट अ वॉर, ओके, and anybody who is suffering from it will understand what I am saying. Okay. Now, what is the 5 things which is definitely very important for PCOS? Teenagers are suffering from it. Young mothers are suffering from it. People see. I help a lot of people with PCOS. So this is one of my very passionate topic. Okay. So I will be talking every aspect of PCOS. So one very important thing is sleeping on time.
If you are not sleeping on time, you cannot win your war against PCOS. So there is 8 hours of undisturbed sleep needed. So you need to sleep by 10, 11. Why? Because your body is like a cycle, and anyways the cycle is disturbed. The hormonal cycle is disturbed. If you want synchrony, you have to first bring your body into balance. Okay, so the first thing is your 8 hours of sleep without disturbance. Okay, the second very important point is how much ever weight you are, you need to hydrate yourself that much. So if you are 1 kg, you need to 20 kg, you need to have 1 liter of water. अगर आप 20 kg के हैं तो आपको 1 लीटर पानी पीना ही पीना है. तो अगर आप 80 kg के हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना है. PCOS आप जीत ही नहीं सकते अगर आप हाइड्रेट नहीं करते. ठीक है. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टाइम पे खाना खा रहे हैं. आपका टाइम मेंटेन होना चाहिए. अगर आप 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं तो 9 से 9:30 नहीं करिए. आप 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट करिए. अगर आप 1 से 1:30 के बीच में करते हैं तो 2:30 मत करिए. ओके, सो कंसिस्टेंसी, द बॉडी शुड गेट यूज्ड टू हैविंग थिंग्स एट सेम टाइम एवरी सिंगल डे. डिनर अर्ली करिए अगर आपको PCOS है. जनरली PCOS एक विशियस साइकिल होता है. तो PCOS होता है, PCOS की वजह से थायराइड होता है, थायराइड की वजह से डायबिटीज होता है, और ये साइकिल चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है. तो अगर आपको इस साइकिल से निकलना है तो रात को डिनर अर्ली करिए. विद इन 7-7:30 आपका डिनर हो जाना चाहिए. तो खाना ठीक खाना है, पानी अच्छे से पीना है, सोना है. चौथी जो जिस चीज के लिए मैं हाजिर हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करना है. नॉट ओनली योगा. PCOS अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ मिक्स्ड एक्सरसाइज. ओनली योगा won't help, only cardio won't help. Okay, I am just squatting. Okay, for 1 minute I will be squatting. Okay, and then I will take a break of say 30 seconds, and then I will maybe do a plank hold for 1 minute. Okay, so basically 5-6 एक्सरसाइजेस आप पकड़ लीजिए. प्रॉपर वार्म अप करिए, प्रॉपर कूल डाउन करिए, और ये 5-6 एक्सरसाइजेस, हर एक एक्सरसाइज 1-1 मिनट 45 सेकेंड 15 सेकेंड का ग्रेप, फिर से ऐसा आप 30 मिनट्स तक करिए. We now move on to session 2 on sexual and reproductive health, current status, challenges, and the way forward. भारत में एनीमिया डिटेक्टिंग एक बड़ी चुनौती है. ऐसा क्यों, खासकर रूरल इंडिया में? अनीमिया की जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको मालूम है कि एवरी अल्टरनेट वुमन इन द कंट्री इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, and which is a huge number, roughly 50%. Now the major reasons for high level of anemia in India is that people are consuming food which does not contain enough iron and minerals. That's why under the program, one of the important strategy for preventing and controlling anemia is giving supplementation iron across the board. Every woman is asked to take something called as the iron folic acid supplementation. Keeping in this point in mind, even the government of India has also came up with a big program of, food fortification. Like, wheat is being fortified with iron, rice is being fortified with iron. Even the salt which we are consuming every day, even that is being talked about in terms of fortification, double fortified salt, which contains iron and salt. So the point, what I'm trying to say is that we as Indians consuming less of iron than what is required by the body. That's all from my side, I think, in terms of, why so much of anemia. The UNICEF had some time back said that coronavirus pandemic is also a child rights crisis, as 6,000 additional children could die daily from preventable causes. What's the situation now in India? The data is not available but we will, like the NFHS 5 data is already released.
And further, if you go for the NFHS 6 data on that time, you will get the current situation. At this moment, because affect, that as per UNICEF report, the additional child death and additional maternal death will be happened in this low income countries that was mentioned. So particularly in related to child health, the Anganwadi were closed, and that time the SAM screening was not done. At this time also Anganwadi were closed, and they are giving the take home ration, and giving this hot cooked meal is not served. So that food is going to that particular child is we are not assured about that. One more thing, that during COVID times, most of the staffs were busy in the COVID, like RBSK staff who are referring children who are going to village, and they are checking the child, and they are referring to the NRC. So RBSK staff was more involved in the COVID duties, so that referral was not done. The COVID-19 affect this screening and identification of the SAM and MAM silent community. Right now the data is not available, but it will affect the infant death and child death will be more. एक स्टडी के अनुसार प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मेजर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस झेलने वाली कम उम्र की महिलाओं में 48% ऐसी 48% ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है। आपकी क्या राय है? हम यही देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो केयर सीकिंग है, उनको हॉस्पिटल ले जाने का जो समय है, चाहे वो किसी भी तकलीफ के लिए हो, और खासकर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो वजहें हैं उनके लिए देखा जाता है कि उसमें बहुत डिले होता है। ना तो महिलाएं खुद ही अपने आप की प्रॉब्लम्स को समझ पाती हैं, और ना ही उनको अक्सर ये सपोर्ट मिल पाता है कि वो ठीक तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना, चाहे वो डिलीवरी के टाइम पे भी क्यों ना हो। अक्सर ये माना जाता है कि डिलीवरी के लिए तो उनको हॉस्पिटल ले ही जाया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में, परिवारों में, खासकर आदमियों में, जो महिलाओं के पार्टनर्स हैं, उनमें हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि कितना ज़रूरी है महिला की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, और ये आइडेंटिफाई करना कि कब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। You lead Happy Periods organization and has worked extensively on menstrual health, nutrition, and adolescent health. In 2017, a Mumbai-based startup, Cultural Machine, was the first to grant period leave, followed by Malayalam media organization called the Madhrubhumi. Now, 12 organizations have such a policy. What is your take on this? I personally feel that period leaves should be given to women, to menstruators. I shouldn't be saying women, to menstruators. And there can be policies that can be worked around it, maybe 12 period leaves or a year, or 6 period leaves a year, that can be worked out. But the whole idea is that the counter argument from people I have heard and on debates, or even through personal conversations, was that you won't be as productive as men then, right? Or non-menstruators. So we function differently. Our bodies are different. We our hormones are different. Everything is working differently inside my body. If I am taking a day off, which is and someone who is not menstruating is not taking a day off, that doesn't discount on all the work that I have done in the rest days of my employment, right? So I strongly believe that a day of how many days that can be worked out, how they want to take it, that can be worked out. Even if someone can pass on their period leave to some other menstruating colleague, because maybe I go through pain for one day, and there may be other colleagues who go through pain for 2-3 days, because it's very specific, and also and it depends from person to person, right? And we have several medical conditions, like I have PCOD, someone might have endometriosis, so the intensity differs. So this can be worked out, but what I strongly believe is that every organization should have the culture of
period leave. I think this will increase the productivity anyway. It's not going to decrease the productivity. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के अनुसार सिर्फ 10% पुरुष ही कॉन्डोम यूज करते हैं और 40% महिलाएं प्रेगनेंसी रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन कराती हैं। क्या फैमिली प्लानिंग केवल महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये सिर्फ रूरल नहीं, अर्बन एरिया में भी हो रहे हैं। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो नया एनएफएचएस डेटा आया है इसके तहत, और पुराने एनएफएचएस सर्वे भी अगर हम उठा के देखें तो यही इसी तरह का गैप नजर आता है। A lot of this is associated with gender and social norms. किस तरह के पुरुष और महिला के बीच में पावर इम्बैलेंस रहता है, किस तरह पुरुष किस चीज का कंट्रोल रहता है एक हाउस होल्ड में, इंडिविजुअल लेवल में, कपल लेवल में, स्ट्रक्चरल लेवल पे, जिसका हेल्थ सिस्टम्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिस तरह की बातें डॉक्टर राजेश और अनीशा जी ने भी कही कि क्वालिटी ऑफ केयर, उसका भी एक स्ट्रक्चरल दायरा है कि जो हेल्थ सिस्टम्स के खुद ही लोग हैं वो किस तरह से एक औरत को देखते हैं, एक अनमैरिड वुमन जिसकी प्रेगनेंसी हो गई हो उसको कैसे देखते हैं। और अगर हम फैमिली प्लानिंग के अंदर जो आपने सवाल पूछा है, औरत और महिला के बीच में कॉन्डम इस्तेमाल अभी भी कम क्यों किया जा रहा है, इसके बहुत सारे सप्लाई साइड इश्यूज भी हैं, जो कि कॉन्डम की अवेलेबिलिटी, डिस्पोजल का मसला, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी बहुत स्टिग्मेटाइज्ड हैं ये सारी चीजें। बट ये एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड बात है कि औरत ही कराएगी, स्टरलाइजेशन कराएगी, नहीं तो गोली लेगी, नहीं तो कुछ और, मतलब या अबॉर्शन भी, मतलब वुमेन्स बॉडी का जो मेंटल एंड फिजिकल डिटीरियोरेशन है या एक्सप्लॉयटेशन है वो एक एकदम नॉर्मलाइज सी बात है। तो ऑल्सो फैमिली प्लानिंग हमेशा से ही एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच से चलता है, पॉपुलेशन कंट्रोल टूल के हिसाब से, ना कि एक राइट्स बेस्ड अप्रोच। जैसे अबॉर्शन भी जैसे एक राइट होना चाहिए, उसी तरह फैमिली प्लानिंग भी एक राइट होना चाहिए। बट जब आप महिला का निर्णय करने का जायजा एक घर में, खाने से लेकर पैसा खर्चने से लेकर कहाँ क्या करना है, सबसे लेकर अगर आप वो ही नहीं बदल पा रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग के डोमेन में आते आते कॉन्ट्रासेप्शन कब कैसे यूज करना है, इनफैक्ट सेक्स का टाइमिंग, मेरा मन नहीं है, औरत का यही बोलना इतनी बड़ी बात हो जाती है कि अब्यूज, फोर्स सेक्स, ये सारी चीजें हम सब जानकार हैं इस बारे में। तो इसीलिए मतलब बहुत सारे सोशल और जेंडर नॉर्म्स के चलते, नॉर्मेटिव बिहेवियर्स के चलते, there are reasons because of which women are not able to control their bodies, their lives and their reproductive decisions, to be in specific. Welcome back. And it's wonderful having you on this Sunday morning. I'm Shankar Raj, President of Health4All. Let me remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. Now, yoga has been a highly popular segment in our weekly Health4All show. Each episode had yoga asanas specific to certain ailments, and these were demonstrated by the best of yoga experts. We now showcase the best of yoga from our previous 18 episodes.
sound healing therapy is a very ancient technique of, calming the body, removing all the ailments of the body, aligning the body, mind, and soul, and perhaps just to have a more calming and relaxing effect on your soul. How long, do you get the benefits of sound healing? So sound healing is a consistent practice. There's not a certain number of sessions that if you do, your stress and worry will go away permanently. This is a consistent process. With each session, of course, the worry, the stress, the ailment reduces, and then one day it will not be there. But it depends on person to person how many sessions that individual needs in order to have a perfect alignment. So today we will be working on the most stressful and difficult energy centers, that is the heart and the mind. All right, so I'll be tuning in the heart and the mind, and then once we focus on that, then of course we'll play all the bowls together, creating a harmony in the body. All right, and today we are going to tap into that mind and heart vibrational frequency, as the mind and heart play together because they are so closely related. Their interactions are so close. The mind and the heart think, the mind thinks, the heart reacts. So we are trying to correlate the energy centers and basically align them, calm them, relax them. So you'll keep your back straight. You will sit on a comfortable posture. You can keep your legs crossed or just place them casually straight out in front of you. And close your eyes, hands in the chin mudra, roll your shoulders. Really try to tap into the energy session today, having a calming, relaxing energy, having a good aura. We will take 5 deep breaths through the nose. Inhale deeply. Exhale. So before we start, I will just tell you what the heart, the emotions, the energy center of the heart holds. It holds the emotions such as love, hatred, shyness, closed, jealousy, etc. Okay, so all the emotions that are basically expressive, that is held by the heart, this one. And we will be tapping into the love, into the hatred, into the extreme of the emotions, opening that vibrational frequency of your heart and sort of letting all the positive energies of the sound go into your heart chakra today. Okay, so let's start with the heart one first. Okay, so the heart bowl again has all the emotions, okay, all the love, all the hatred, all the extreme of emotions that sometimes the emotions blind our mind and we are able to take decisions based on the emotions. So everybody requesting you to just close your eyes, be in a comfortable situation. If you like to lie down, you can, and really try to hear the sound. Focus on your heart while we play the sound therapy for this bowl today. Let's begin.
So returning back to our consciousness slowly and steadily, letting all that good positive energy through the vibrational frequency come into your mind, heart, and your entire body. You will take a deep breath now through your nose. Inhale and exhale through your nose. One more deep breath. Letting go of anything that no longer serves us, and starting our day and week with positive energy and good vibrational frequency. एक डेली रूटीन में हमारे यहाँ चाय का पर्सन हो गया है। डेली रूटीन में हम चाय पीते हैं। किसी को चाय पीने के लिए मना कर दें तो आज की डेट में ये बहुत बड़ी एक परहेज हो जाती है। तो हम चाय मना नहीं कर रहे हैं, चाय में ही कुछ चीजें आप मिक्स कर दें तो आपको वायरल इन्फेक्शन से, मौसम के चेंज होने से जो प्रॉब्लम होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, ये सारे चीजें से आप उससे होगा। तो सबसे पहले बेसिकली हम एक चीज बताते हैं जो आजकल पूरी दुनिया में हो चली गई है। हमारी बॉडी पंच तत्व से बना हुआ है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसका मतलब है जो पांच तत्वों से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इसी पांच तत्व के कम और ज्यादा होने से हम बीमार होते हैं। अब हम आपको बताते हैं, एक चाय पीने की रेमेडी बताते हैं। अगर मेरे अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग में आता है और बाकी कई लोगों पे हमने इसका प्रयोग किया है, वह वायरस इन्फेक्शन, उसके बाद सर्दी, जुकाम, ठंड से होने वाले परेशानी, सीजन से चेंज होने वाले परेशानी, माइग्रेन का केस हो, साइनोसाइटिस का केस हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, इस सभी में ये अगर एक कप आप सुबह की चाय पी लें तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो हम कुछ चाय की हर्ब्स बताने जा रहे हैं जो हमारे किचन में उपलब्ध हैं। सौंफ है, मेथी है, बड़ी इलायची, अदरक, दालचीनी और अर्जुन का छाल। अब हम एक एक करके बताते हैं। अर्जुन का छाल आप सुने होंगे, आयुर्वेद में इसकी मेडिसिन बनती है, अर्जुनारिष्ट। और अर्जुन के छाल जो है हार्ट और लंग्स को बहुत ही मजबूत करता है। कोरोना काल में कई लोग हार्ट अटैक से चले गए, नहीं रहे। तो अगर आप अर्जुन की छाल चाय में प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे हार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी परेशानी है वो ठीक करता है। अच्छा, अर्जुन की छाल में जो बेनिफिट है वो यह है जो बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करता है। तो आप क्या करें, जो आप लेते हैं एक चम्मच, छोटी चम्मच से जब चाय बनाते हैं एक आदमी के लिए, दो आदमी के लिए, एक छोटी चम्मच से एक चम्मच सौंफ लें, एक छोटी चम्मच से मेथी लें, बड़ी इलायची लें, अदरक लें और अगर अर्जुन का छाल है या अर्जुन का पाउडर तो एक चम्मच वो डालें और उसको बिल्कुल धीरे से उसको उबालें। जब धीरे धीरे उबल जाए और मैं थोड़ी धीमी आंच पे जब उबल जाए तो उसको आप अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो हनी का प्रयोग करेंगे। अगर सामान्य मरीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं है राब, अगर राब उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शक्कर मिलाएं। अगर आप चाय का टेस्ट लेना चाहते हैं तो चाय पत्ती भी डाल दें, कोई नुकसान नहीं है। तो थोड़ा चाय पत्ती भी डाल दें, उसको जैसे आप लाल चाय बनाते हैं ठीक उस प्रकार से छान लें। उसमें आप अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो आप हनी मिलाएं और नहीं तो आप शक्कर या राम मिलाएं। और अगर दूध भी मिक्स करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मात्रा उबलती हुई दूध को उसमें मिला दें और चाय की तरह पिए। आप देखें जो अगर इस चाय को अगर आप दैनिक रूटीन में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का, हम 100% दावे के साथ करें क्योंकि हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी, ठंड से कोई परेशानी नहीं होगी,
हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी वह भी ठीक हो जाएगा। गैस की प्रॉब्लम होगी क्योंकि सौंफ जो है गैस को दूर करता है। अदरक पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है। अर्जुन का छाल है वह भी गैस को कंट्रोल करता है। तो ये चीजें आपको बहुत बेनिफिशियल देंगी। तो एक सुबह की चाय में अगर आप इस प्रकार की चाय पिएंगे तो आपको बहुत लाभ देगा। अब हम एक टिप्स बताते हैं आपको जो पूरी इम्यून सिस्टम को 100% डेवलप करके रखता है। अगर आप दैनिक रूटीन में एक मुस्कुराने की हैबिट आप बनाएं जिस प्रकार से हम बता रहे हैं। आप क्या करें, अपने घर में जो आपके बच्चे हों, बीवी हों, पिताजी हैं, माताजी हैं, एक समावेश बनाएं। हम लोग भी योग कराते हैं, कई जगह जाके कैंप में भी कराते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि घर के सभी सारे लोग कुछ एक टिप्स को भी सामूहिक रूप से करें तो सब स्वस्थ रहेंगे। घर में कोई एक बीमार है तो आप सभी आदमी परेशान हैं, इसलिए घर के सभी मेंबर स्वस्थ हों फिर संसार स्वस्थ होगा। इस प्रकार से तो हम क्या करें, धीरे से मुंह बंद कर लें और फेस टू फेस एक दूसरे को देखें और सारे जो तनाव है एक दूसरे के ऊपर वह खत्म भूल जाए। कोई तनाव नहीं, सुबह उठे सारे तनाव को भूल जाए और एक दूसरे को फेस को देखें और फेस को देख के मुंह बंद कर लें, दांत बंद रहेगा और मुस्कुराना है। मेरे साथ एक बार मुस्कुराइए आप सभी आदमी लोग जुड़े हुए हैं, देखिए ऐसे इस प्रकार से आप बार बार मुस्कुराएंगे। कैसे, तो मुंह बंद रहेगा, दांत नहीं दिखना चाहिए। ये 5-6 मिनट इसका अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपके पूरे 24 घंटे के समय आप स्वस्थ हैं। I would like to mention what all advances has happened in yoga. In 90s and 2000, early 2000, what happened? Yoga was started considering as a women program. You know, if there used to be only women teacher and there used to be women yoga session. There were very few men involved because what happens? There was a notion that yoga is very gentle and it is not to stress a lot. And there came something called broga, which comes from the word like bro, brother, okay, which is basically oriented for men. And then the yoga was combined with HIIT and stuff like that. So for example, how earlier the Surya Namaskar used to happen. Now there are so many variations in Surya Namaskar, which we had covered also, like Surya Namaskar with squats, or Surya Namaskar with a jump, or Surya Namaskar with a high plank hold, or Surya Namaskar with elbow plank hold. So all these HIT movement came in which we were supposed to hold the posture for so time, which were very challenging for the body, so that the men also join the program. So that was the first advancement which has come from past say 10-12 years, that even the men join it, and it has been made more competitive or more challenging for the body. Okay, दूसरा जो एडवांसमेंट आया उसको बोलते हैं रोगा, which is basically exercises for runners. Okay, तो रनर्स क्या करते थे कि हमेशा रन करते रहते थे एंड उनको शिन पेन होता था या हिप पेन होता था या नी पेन होता था, and it used to hurt them really bad. So there came a thing called runners actually run for 30 minutes और उसके बाद 30 minutes वो stretches करते हैं. Like for the shin pain, it is very, very good practice for runners to just sit in Vajrasana. Okay, that stretches your shin. If it is painful, you can even roll a towel below your ankle and sit like this for some time. Okay, so basically, Roga came for runners where there is running plus yoga. Okay, then there came something called paddle yoga. Okay, now what is paddle yoga? Also called as SUP. Okay, stand up the paddle. It is basically for people who are water lovers, and only for advanced yoga. People who have been practicing yoga for a lot of time,
and who are good swimmers and who has love for water, they use a paddle or something to support you, like it will look like a yoga mat, but it is basically floating on water, and you stand on that and you do yoga posture. Okay, now how does it help? It is very very good for core strengthening. आपका core और back ये बहुत अच्छे से strengthen होगा, क्योंकि आप पानी में खड़े हैं और पानी में अपने आप को बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं with all the posture. ये सबको पता होगा, क्योंकि ये मलाइका अरोरा खान की बहुत सारी पिक्चर फ्लोट होती रहती है. उसको बोलते हैं एरियल योगा. एरियल योगा मतलब ऊपर से एक क्लॉथ का पीस, जनरली सिल्क क्लॉथ होता है, उसको क्लॉथ के पीस को आप टांग देते हैं और आप हवा में झूल के स्ट्रेच करते हैं, लाइक पैरों को उस क्लॉथ पे रखना और बॉडी को पूरा पीछे ले जाना और नीचे की तरफ स्ट्रेच करना. हाउ डज इट यूज्ड? इट इज यूज्ड बाय यूजिंग ग्रेविटी. तो आप अगर हवा में हैं और ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रहा है तो आपका स्ट्रेचेस अच्छे से होगा. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट आया. एरियल योगा बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक लास्ट 2-3 ईयर्स से तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. वो है योगा फॉर मेंटल हेल्थ. जनरली योगा अगर किसी को बोलते थे योगा करो, तो आज से 5 साल 10 साल पहले उसको लगता था 10 सूर्य नमस्कार कर लो बस योगा हो गया. ओके, पर आज की डेट में 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चलती है जिसमें योगा ओनली फॉर मेंटल हेल्थ करते हैं, एंड इट हैज बेनिफिटेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, जिसमें बेसिकली हम प्राणायाम करते हैं या फिर हम योग निद्रा करते हैं या फिर हम मेडिटेशन करते हैं, एंड द होल सेशन लास्ट 1.5 year, which was not there earlier. Today we're speaking about gut health, right? In English, you would have heard the phrase, I have a gut feeling, gut feeling that this idea is good, something's going to go wrong. Because gut is considered to be your second brain. Okay, your brain is very closely connected to your gut or your digestive system. तो मतलब सोचिए ना कि अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगे, थोड़ा सा डर लगे, you feel a knot in your stomach. जैसे पेट में कुछ तो होता है, because you feeling that. Yeah, so it is very directly connected. Now think about the other way around. अगर आपका पेट खराब हो, तो आप भी इमोशनली थोड़ा सा ना मूड खराब ही होता है, right? So your digestive system to be clear, to be happy is extremely important for your day. Today we're going to go through a couple of asanas. So let's first start with asanas that you're doing when you're standing. Okay, standing asanas. बहुत ही सिंपल asanas हैं. Okay, जो कोई भी एज का कोई भी कर सकते हैं. We'll start with those first. Okay. When you're doing for your gut health, there are 2 things you have to keep in mind. One, you're looking at your digestive system. जैसे अगर आप सोच रहे कि आपको शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करनी है, what will you do? You'll move your shoulder. You will take weights to strengthen your shoulder. In the same way, if you're thinking about your gut, you have to move your gut. Everything is about your gut. And secondly, what is important are your hips. If your hips are not loose enough, if they're not comfortable in movement, then you will have some sort of a gut problem. Yeah, so let's start with the first one. Hip distance between your legs and just move. Okay, rotation. Second one that you can do. Okay. Hip distance. Lift one hand up. Bend to one side. Lift the other hand up. Bend to the other side. Third one that you can do. Back straight, spine straight, fold your waist, bend up. Okay. What a lot of people do is they do this. They slouch and they try to reach. Now that is not good. Okay. Your spine needs to be straight. Hold your back, hold your waist, and bend up 45 degrees or a little more. How much have you get? जितना हो सकता है उतना करें. Okay. What you are doing here is you are pressing your stomach. Okay, यहाँ पे. So then you can come up. Support your back. Bend back. Come back straight.
Very simple exercises. From here, you can move to twisting. Twist your butt. Okay, these can be done by absolutely anybody of any age. These are very simple to do during your daily activities, normal lifestyle. Now we'll look at a slightly complicated set of asanas, which you can do. Okay. Look at the instructions correctly. Okay, we're going to start with the first one. Okay, all of these are hip opening exercises that we're going to start with. Okay, enough distance between your legs. Now, turn your one foot. You can, let's say, start with left leg. Turn your left leg. 45 degrees. The right leg looking straight. Bend down. In any case, your knees should be at 90 degrees. हमेशा 90 degrees होना चाहिए. अगर आप ये कर रहे हो, तो there are more chances of injury. Okay, तो safe side के लिए हमेशा आपकी नी फुट की जो लाइन है उसके पीछे ही होनी चाहिए. So you're staying at 90 degrees. Take the support of your hand, keep it on your knee, and then lift your hand up. Okay, your leg, body, and hand. Everything is in one straight line. Same thing you will do on the other side also. 90 degrees, take support of your hand, lift your hand up in one straight line. Okay? इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप आगे मुड़े. That is wrong. You have to be in the same plane as your legs and then look straight. Now, the next one we're coming to the most best asana for absolutely any gastric problem. Okay? It's going to be really good. That is Malasana. Okay, what are you doing? Or Indian toilet pose. Yeah. Now we've all shifted to English toilets, most of us. But the Indian toilet pose is the right way of allowing any bowel movement through your body. So, keep hip distance between your legs. Calm down. Okay, your buttocks slightly above the ground. Once you've sat down, you can do this. Use your elbows and your shoulder strength to make a namaskara in the middle, right to the center of your chest, and move your legs in. For most people, because we're not used to sitting down, even sitting like this can be very difficult. Right? It is. So what you can do is yoga blocks or use any tough material, place it under your buttocks and you can sit on it. Okay, पहले तो आदत के लिए you can place something under your buttocks and sit. For some people, if you feel like you're falling behind in the start, you can even take the help of a wall. Back straight, sit. Buttocks off the floor. Just sit. Once you're used to this position, once you can do this, then you move forward. Okay. Namaskara. Start with this. After a few days, maybe you can do this. After a few more, maybe you will be able to do this. It's a very good asana for allowing bowel movement through your body and out of your body. What is most important is keep your spine straight. ये करके नहीं बैठना. Okay? You have to keep your spine straight, erect, and then do that. बहुत सारे आसन हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, पर जो योगा का एक रूल है कि we should not practice all the asanas. हमने किसी को देखा और उसे कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक आसन के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं और उनको जानने के बाद ही हमें वो प्रैक्टिस करना चाहिए. यहाँ पर मैं आपके लिए 10 आसन्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है. अभी मैं सिर्फ आपको हर एक आसन के 3 रिपीटेशंस बताऊंगी. आप चाहे तो इसे अपने घर पे 5 से 10 बार अगर इसे इंक्रीज करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा. सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ
तड़ासना और माउंटेन पोज। इसे कैसे करते हैं? ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने पैर को थोड़ा सा खोलते हुए खड़े हो जाइए, अपने हाथों को इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर के जाइए, छोड़ते हुए खड़े रहिए, गहरी सांस लीजिए, इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को अपने बगल में लाइए। दिस आसन इज वेरी इफेक्टिव। इससे आपका वर्टिबल कॉलम स्ट्रेट रहता है और जो आपकी पोस्चर की डिफॉर्मिटीज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप जो रॉन्ग पोस्चर में बैठते या खड़े होते हैं, आपके वर्टिबल कॉलम को स्ट्रेट करने में और आपके चेस्ट को एक्सपैंड करने में यह आसन बहुत हेल्पफुल होता है। हम दूसरा आसन करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके बॉडी में एक बैलेंस लाता है। आप जब इस आसन को करेंगे तो बैलेंस लाएगा, माइंड आपका काम होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है आपके हार्ट इश्यूज के लिए। आपने देखा होगा तनाव, जब भी आपकी तनाव बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है। तो इस तरह से कामिंग इफेक्ट देता है, आपके चेस्ट को ओपन करता है, हार्ट को ओपनिंग का ये काम करता है। वृक्षासना के लिए हमें क्या करना है? आपको अपने पैर पे सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना है और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, कुछ दिनों की प्रैक्टिस लगेगी। सबसे पहले आप दाहिने पैर पे, राइट लेग पे खड़े होइए बैलेंस होकर के। लेफ्ट लेग को अपने उठाकर अपने थाइस पर आप बैलेंस कीजिए और अपने हाथों को उठाते हुए जोड़ करके काउंट कीजिए मन में। आप 2, 3, 4, 5। चेहरे पर अपने मुस्कान स्माइल बना के रखिए। फिर आप अपने पैर को नीचे कीजिए। फिर इसी तरह आप राइट लेग को उठाकर अपने लेफ्ट लेग के थाई पर रखिए और गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। फिर आप अपने आप को नीचे कीजिए। आप इस काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं अपने आप की जितनी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप इसे ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। वृक्षासना के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, जो कि आपके हार्ट ओपनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, बैलेंसिंग के लिए, दैट इज त्रिकोण आसन, जिसे ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं। इसके लिए अपने पैरों को आप अपने कमर से, अपने हिप पोर्शन से ज्यादा खोलें और उसके बाद थोड़ा सा आपको ब्रेथ का कंट्रोल करना है। अपने दोनों हाथों को फैलाएं और सबसे पहले अपने बाएं हाथ को नीचे की तरफ ले जाते हुए गहरी सांस लेंगे। इनहेल करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और इनहेल करते हुए अपने दाहिने हाथ को साथ में सीधा करते हुए अपने गर्दन को टिल्ट करके हम दाहिने तरफ से अपने हाथ की हथेलियों को देखेंगे। इस तरह से हम अपने आप को होल्ड करेंगे, मन में काउंट करेंगे 5 तक। उसके बाद धीरे से एक्सहेल करते हुए हम अपने आप को बैलेंस करके फिर से सेंटर में लाएंगे। दूसरे तरफ करेंगे हम, ये दोनों साइड के लिए होती है। अब हमें गहरी सांस लेते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ रखते हुए अपने गर्दन को बाएं तरफ टिल्ट करके हम अपने हाथ को देखेंगे। मन में काउंट करेंगे 5 तक और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए हम खड़े हो जाएंगे। वृक्षासना के बाद जो एक आसन है दैट इज वीरभद्रासन। इसे वॉरियर पोज भी कहते हैं। इस आसन के लिए हम अपने पैरों को खोलेंगे, अपने दाहिने पैर को आगे लाएंगे, हम ऐसे खड़े होंगे और अपने दाहिने पैर को हम 90 डिग्री पे रखेंगे और बाएं पैर को इसके 90 डिग्री पर रख करके हम अपने नी को अपने एंकल के पैरेलल ला करके अपने हाथों को उठाते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे और इनहेल करते हुए हम इस तरह का पोस्चर बनाएंगे। इस
गहरी सांस लेने की क्रिया में आपका हार्ट ओपन होता है, आपके बॉडी में बैलेंस आता है और आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है। इसके बाद है उत्कट आसन और चेयर पोज। इसके लिए है ये आपके बॉडी में बैलेंस लाता है, आपके सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके लिए हमें बैठने के लिए चेयर के पोस्चर में हम ऐसे बैठेंगे और गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करके वापस आएंगे, फिर गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे चेयर पोज बैठते हुए। आपकी स्पाइन सीधी होती है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम, चेस्ट ओपन होता है आपका। हम करेंगे मार्जरी आसन और कैट पोस्चर। इसके लिए हम जमीन ऐसे अपने वज्रासन में बैठेंगे, अपने हाथों को नीचे लेकर के नीचे करेंगे और गहरी सांस लेते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए हम नॉर्मल आएंगे। फिर एक डीप गहरी सांस लेंगे, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधन आसन। इस आसन के लिए हम जमीन पर लेट जाएंगे, अपने घुटनों को बेंड करेंगे और अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे और अपने पेल्विक एरिया को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस लेते हुए हम अपने पेल्विक एरिया को ऊपर करेंगे, फिर छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। इसके बाद एक आसन है सेतु बंधन आसन। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्य आसन। ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा है, जिससे दोनों चेस्ट आपकी ओपन होती है। सबसे पहले लेफ्ट लेग को हम अपने हिप एरिया के पास लाएंगे, राइट लेग को क्रॉस करेंगे और अपने राइट हैंड को अपने राइट लेग पर रखकर अपने नेक को पीछे की तरफ घुमाएंगे और बाहर करते हुए जैसा मैंने बताया आप एक्सहेल करेंगे। फिर आप सेंटर में आते हुए इनहेल करेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से करेंगे। अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट हिप के पास लाकर लेफ्ट लेग को अपने राइट नी के पास लाएंगे। अपने लेफ्ट फीट पर रख करके राइट हैंड को पीछे की तरफ ला करके हम पीछे की तरफ देखेंगे। और लास्ट जो आसन है दैट इज पश्चिमोत्तासन। यह आसन हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब इस आसन में हमारा चेस्ट जो है हमारे हार्ट के नीचे आता है, प्रॉपर सर्कुलेशन आता है, कामिंग इफेक्ट आता है और हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन को स्लो करता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है पर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप ये पूरा झुक नहीं पाते हैं एक्सहेल करते हुए, तो आप अपने नी को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं शुरुआत में। बाद में प्रैक्टिस से आप अपने हैंड से अपने नी को टच कर सकते हैं नेक से। जस्ट कोशिश कीजिए इनहेल करते हुए, इनहेल किया हमने हाथ ऊपर किया और एक्सहेल करते समय हम अपने सांस को पूरी बाहर करते हुए अपनी नी को अपने नीज के बगल में नोज को बीच में लाएंगे और अपने आप को बैलेंस करेंगे, काउंट करेंगे 5 तक और हम इस तरह से अपने को छोड़ेंगे। Today the topic for yoga is obesity for yoga. Okay, so very important thing to understand here is when we talk about obesity, we also have to talk about being lean. Okay, so I don't think so being lean or obesity is a disease. Not being fit in your body frame is a problem. You agree with me? Because at the end of the day, even if I am thin and I feel fatigue and I feel weak, okay, and I am only surviving on salad and not eating anything to give me energy is also a problem. Why I am telling this, especially in the obesity place, because I make almost 150 to 170 women exercise. So if I want to lose
my weight through yoga, you have to understand just by doing some yoga asana, it will not happen. It is a process. You have to have 8 hours of sleep, okay? 8 to 9 hours of sleep where you are allowing your body to rest completely. You know, if you are well rested, your mind is well rested, you are stress free, your body is well rested, it will respond to yoga much better, okay? So first is you need to sleep. You need to have water, okay? Water, hydration. If I am 20 kg, I have to have 1 liter of water. So if you're not having water properly, you will not lose weight, okay? Then the third thing, which is very, very important, is are you eating a balanced food? If you are eating 4 days of salad and 5th day going out and eating in McDonald's, it's not going to work with yoga, with anything, you will not lose weight, okay? So it is very important that you have a balanced food. Fourth, as a yogi, you need to master this. If you are a yogi, you don't eat anything after 7, okay? That is a yoga practice. So when I say that you can lose weight through yoga, you need to understand these 4-5 components which I have talked about has to be sorted. Only if this is sorted, then you do yoga asanas, then you will lose weight. Some yoga asanas which can definitely help in losing weight are the yoga asanas which are basically forward bending, because you are using your abdominal muscles to forward bend, okay? So it decreases the fat around the abdominal area. So if I do something called Paschimottanasana or if I do Naukasana, then it is definitely helpful. Now, when I say Naukasana, you need to perform, basically, you need to go down and then come up and hold pose pointing towards yourself and hold this pose for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You don't hold your breath in any of the yogasana, okay? Very important is you don't hold your breath. Now, another forward bending pose which we can do is Paschimottanasana, where I go down. You need to go down not from your back, from your hip. So you go down from your hip, try to go down as much as possible and hold this pose. Try to bend your elbow as much as possible. Hold this pose, okay? Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, and relax. So all the forward bending pose will help you lose weight, okay? So even if I do anything in which I am bending forward, I will, if I go all the way back and I come forward and touch my toe, of course I will start losing weight because this all works on your abdominal area. The second asana which will help you lose weight is twisting, okay? So when I twist, for example, this is Gomukhasana, and in Gomukhasana, I basically twist. Okay, so then I am working on the side fat. Okay, so all the asanas in which I twist, breathe out, go other way around. So all the asana, even if I do a spinal twist in which I take my leg, cross it over, and take it to the other side, this will also help in losing weight because this is all working on your abdominal area. So you need to understand, one is all the asanas which is basically forward bending will help you lose weight. Second, all the twisting asanas where you are twisting your body will help you lose weight. Third, which is very, very popular among people are Surya Namaskara. I have demonstrated Surya Namaskara in earlier classes, but I will do. So you can not only do Surya Namaskara, you also have to do, you can also do a lot of variation in Surya Namaskara. But now we need to very much understand that if I am ready to do a Surya Namaskara or not. So whether my blood pressure are all okay or not. So you need to understand that one sudden day you are 100 kg and
one sudden day you can't decide that I want to do Surya Namaskara. You have to be fit enough to do Surya Namaskara. You can't be having bilateral arthritis and doing a Surya Namaskara. Why I am saying this? Because I'm also a physiotherapist. So you need to understand that when you are starting to start using Surya Namaskara, you have to also understand whether your body is taking it. Always listen to your body, what signals you are giving. So we'll start with Surya Namaskara. So basically, you come, breathe in, okay? Breathe out, you go all the way back. Breathe in, breathe out, you go all the way down, okay? Keep your right leg forward. You can keep your left leg forward or right leg forward. That's all dependent on you, okay? Now, for example, I am in this pose. I can do warrior pose. So I will come up and I will do a warrior pose. 1, 2, 3, which becomes a variation in Surya Namaskara. Now, Ashtanga Namaskara. So, your chin, your chest, your knee and your ankle, everything is touching the ground. Okay. Breathe into cobra and breathe out to mountain. Now I am in mountain pose. Your heel is completely down. I keep my one leg up, toes pointing up. Hold it there. Don't hold your breath. 1, 2, 3. This is a variation. You need to understand all these are variation. 10 and relax. You can keep the other leg up. 1, 2. Breathe in, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And you keep your left leg forward. Okay? Come down. Keep your right leg forward. Look forward. Okay? And go up in chair pose. So you can do a chair pose and hold it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. Okay? So you need to understand that though there are 12 poses in Surya Namaskara, we do 12 on the right side, then 12 on the left side, making it 24. Okay? But you need to understand that you can do lot of variation in this cycle itself. You can bring 30 more poses. So one of the very, very good poses of backward bend is Dhanurasana, and it helps in losing weight because it helps in improving your metabolism. So Dhanurasana, how do you do that? You lie down on your tummy and you hold your ankle and you come up. You hold it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Welcome back. So that was the best of yoga, and I hope you would all be able to do some of these asanas at home so that you benefit from what the yoga teachers had taught you. We now move on to the next segment, that is the quiz number 1.
Well, this is quiz time now, and quiz number 1 is, which of the following regarding yoga is correct? A, physical postures and breathing exercises in yoga help improve blood circulation, oxygen flow, and hormone functions in the body. B, yoga enhances mood and inculcates a sense of well-being. C, yoga reduces blood cortisol, the stress hormone. D, all the above. The answers would be given at the end of this particular session. Over to you, Kishore. थैंक यू मिस्टर शंकर। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोविड-19 वायरस की चपेट में है। इस दौरान अफवाह और गलत सूचनाएं भी तेज गति से फैलती जा रही हैं और लोग कंफ्यूज्ड होते रहे। इस कंफ्यूजन को दूर करने और कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्थ फॉर ऑल ने अपने अलग-अलग एपिसोड में देश के टॉप एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया। यहाँ उन एक्सपर्ट्स की सलाह को कंपाइल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे मॉडरेटर श्री आर शंकर। Barely a year after the vaccine developers reported spectacular successes in SARS-CoV-2, the latest variant of virus has presented them with a new challenge, with Omicron spreading at unprecedented speed and its ability to dodge immunity, whether from previous infections or vaccinations. The new threat has galvanized vaccine developers and public health officials. What direction should they be pushing? Should it be a booster dose, or an Omicron-specific vaccine, or probably a bolder option of universal coronavirus vaccines that would aim to protect against every mutant of SARS as well as other coronaviruses that nature might throw up at humans in the future? Probably a vaccine booster based on hybrid spike sequences of SARS-CoV and SARS-related viruses. When you say a pan-coronavirus vaccine, which could be a kind of universal coronavirus vaccine, do we need that? Yes, we actually need a vaccine which can help us not only to fight against the ongoing variants, but also capable of providing us a protection against any future variant which we do not know that what level of mutations and where all those mutations may appear. But of course that is a work in progress. So for the moment, any such thing in a very limited time frame when we are seeing this new variant Omicron may not be a practical possibility. So we probably have to think about some other possibilities that we probably have in hand, and we can actually apply to actually tackle this upcoming situation by the new variant called Omicron. Now the question comes is that what are those possibilities that we have in hand? Now I'll answer your first question, that what happens when we got the natural infection or when we got the vaccination? How much that initial immunity is going to help us against this variant called Omicron. So if you little bit look into the details of the Omicron, there is a huge mutation, right? There are almost close to 50 mutations happen since this particular variant. Majority of them lies in the spike protein,
which is required for the interaction with the host cells. And this is something which what we are assuming, that those multiple of mutations might be helping in increasing the transmissibility, maybe actually increasing the immune escape of that variant. When we say immune escape, mostly relies on the antibodies, the analysis that yes, it may escape a lot of antibodies. So now if we put this context into the relation of infection or vaccination acquired immunity, yes, there are most likely chances that we get a big hit on our antibodies by this variant. That may actually lead to a scenario where we may acquire infection. We may acquire reinfection even if we were infected before, even if we were vaccinated. But we should not forget that our immune system does not only rely on antibodies. We do have the T cells that comes into action when it is required for a protection against a virus. And here, on the basis of the current analysis that we have learned is, although there will be a major hit on the antibodies, there will be a very marginal hit expected on the T cells, which may actually help us to coordinate the response with antibodies and provide the protection. So the possibilities are, we may have good T cells that we have acquired from vaccination, previous infection, or previous infection plus vaccination that will control the virus at the very early stage, control the Omicron at a very early stage of infection. So we may not get into the severity of the disease, but we may still have the infection. So that is something which is from what we have right now. With your experience in Noida for so many years, yes. how do you say how you've been able to rehabilitate COVID patients both physically and also mentally when they have fears? Especially you come from an area where people probably might be you have a combination of the IT crowd plus a crowd from the rural areas. So how were you able to rehabilitate those two segments of population? Sir, actually, I was there in the field during the COVID pandemic. In the second pandemic, I have seen people panicking and dying in front of me. So basically, still I am treating the patients of post-COVID fibrosis, lung fibrosis. So इसमें basic idea ये है कि COVID treatment के बाद patients की जो panic situation होती है, still they are fighting. Many patients are fighting with COVID-19 still post-COVID fibrosis. Mental illness is the major concern. They are panicking whether I am going to survive or not. Their family members they are on oxygen support, still on oxygen support. So mental illness सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे. When we speak of rehabilitation of COVID patients, how long should a COVID patient be careful before he resumes normal activities, especially in the light of long COVID and Omicron? What about COVID patients with comorbidities? I don't think there is any one size which fits everybody. That is not a response. It has to be tailor-made depending on how the person has fared and what the comorbidities are and what is the support system around the person and what kind of help and assistance the person has received. It will depend upon individual factors rather than one size fit all advice, please. Yeah. So it should be actually, people should be careful according to their, whatever is their comorbidities or what they have with us. And as you said correctly, that there is no one size fits all. But should people with comorbidities be more careful? I don't think there is any doubt on that. And what about rehabilitation of mental health patients? You mean rehabilitation of what exactly do you mean by rehabilitation? People who are stressed out due to COVID and who had issues with that, the fear factor and other things that they had. How do you bring them back to normal life? सर जी बड़ा सिंपल सी बात है हमारे देश में और सारी दुनिया में, और एक हिंदी में मुहावरा है जिससे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती. राम से बड़ा राम का नाम.
उसी तरह से डर से ज्यादा बड़ा है डर का डर। जब तक आप डर के डर से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सामना करते, और सामना करने के लिए डर से तो बाहर आना पड़ता है। So we need to come out of fear that is there, and how do you make people come out of fear? डर का सामना करने की सर 4-5 स्टेजेस होती हैं। हर व्यक्ति जब किसी भी अनहोनी घटना से गुजरता है तो वो कुछ स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, जो कि लेकिन ये बात पुरानी हो गई कि कोविड अब 1.25 साल से देश में है। दूसरी स्टेज यही होती है कि हम उससे लड़ते हैं कि भाई मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। आमतौर पे अब जो हम इस स्थिति में हैं तो शायद ये वाली स्थिति भी लोगों की या तो ना हो या कम हो। तीसरी स्टेज होती है बार्गेन करने की, यार कुछ ले दे के निपट जाए, कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो। उसके बाद आता है जिसे कहते हैं उदासी का दौर, कि अब तो सब कुछ हो गया, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मेरे घर वालों को हो गया या हो जाएगा और अब कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके बाद चौथी स्टेज आती है जिसे हम लोग एक्सेप्टेंस। जब वो स्टेज आ जाती है तब इंसान अब जो भी समस्या है उसके लिए अपने साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज, इमोशनल एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिप्लॉय करता है, कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल बिग पिक्चर, और फिर उसके बाद ही वो सही तरह से रेस्पॉन्ड कर पाता है। Dr. Chaturvedi, the Prime Minister last night approved vaccination for teens in the age group of 15 to 18. He has also approved a booster dose for frontline workers and people above 60 with comorbidities. What are your views and what's your reaction? That was awaited for a long time, because not the medical fraternity, especially IMA and other people, were suggesting that we must work out for a booster dose. It's like preparation for the war. We know that probably it's possible that maybe a third wave or whatever you say, there may be increase of cases. At that time, you require a very confident frontline workers. If your workers are not confident, if I am going the war, and if I don't have those protections, probably I'll feel more hesitant. I'll be more confident as a healthline worker if I am protected. So it was going on for last 15-20 days, this thing. So that was the most appropriate and the most timely announcement by our Honorable Prime Minister. And not only vaccination, actually vaccination, beyond vaccination is also important. What he told, that vaccine is important, but we have seen in Europe what happens even after vaccination, what is happening. In fact, there are countries which are almost 100% vaccinated, but they have so much corona. So we really don't know. Vaccine cannot be the only thing. So vaccine is one, but he also added one thing, I must tell you. He says, please don't forget what we learned. We learned about mask. So he again told about mask. Otherwise, we are all discussing about mask every day. Probably everybody knows about it. But when it comes from Prime Minister's, from this statement come from Prime Minister, please don't forget your mask, don't forget the washing of hands, the social distancing. Repeatedly we talk, especially coming from Prime Minister's statement, then it becomes very, very important. So we have different tools. We don't, not only vaccination, we have vaccination, we have other tools which we have learned from many years, from hundreds of years. We have learned that how to stop the pandemic by putting on the mask and the hygiene and distancing, social distancing, and by talking behavior. I always add to it the talking behavior. When you are talking to each other, that is a time when you are excreting the virus's maximum. So when you are talking, so kindly don't talk face to face, especially on the dining table, because once you're on dining table, you don't have a mask with you. I first will start with you on your on your views on the nasal vaccine that has been announced that it is supposed to come early next year. What's your viewpoint on this?
I guess we should wait for more data both about DNA vaccine and the nasal vaccine, but they seem promising, especially in the ease of administration. But I want to go back to what Dr. Chaturvedi and Dr. Panda both said so beautifully. Dr. Chaturvedi in a very elaborate, detailed manner, and Dr. Panda with his inimitable style, pithy and yet hitting hard. I will completely agree with as a psychiatrist, as a behavioral scientist, also trained in public health and epidemiology, in fact, egged on by Dr. Nath and Dr. Panda kind of experts, I want to say a couple of things about that interface between behavioral sciences and public health. One, I 500%, 1000% agree with Dr. Panda about the term social distancing. I remember having said it on Doordarshan on 22nd March 2020, just as we were beginning the lockdown. The trouble is, please understand, not much can be done now because the European tradition saw it as social distancing. For us, it is important to emphasize what Dr. Pandava said, and I'm hoping that will happen. Two, the last point that he made. See, for the last few years, many public health professionals and a few of us behavioral scientists have been trying to get across to the masses, and it is beginning to happen. I see that your behavior, your health status, Shankar, or my health status, to a significant extent will depend on my lifestyle and my behavior, in addition to the genome and the genetic risk. But that behavior is important for one's own health status. Just as that was beginning to happen in our countries, at least minimally to more, now we have to realize it to the next level. And I call it as interdependence of healthy behavior. Like Dr. Pandav said, not only we should all feel one in fighting this epidemic, but we need to realize that amongst the 5 of us in a family or 20 people working in a team, everyone's health status is going to depend on how everyone else behaves. So it will not be enough, Shankar, for you or me or Kishore Malviya to behave well, responsibly for one's own health. Among the 3 of us, if we are working together daily, and if one of us doesn't behave responsibly, all of us are at risk. So this idea of passive risk that came into health field from the tobacco, if you remember, is very crucial to get across, and that is what we need to do. One more triangle that I want to draw. I don't know if I have said this on your shows earlier, but again, I've been trying hoarse about this, like the issue of physical distancing and this. Even before the biological vaccine came up and was administered, it was much more important. But the crucial part is that even with the biological vaccine, now at its late stage of implementation, behavioral vaccine does not lose its importance till this virus actually becomes endemic. We'll keep having this, call them whatever, crests, peaks, whatever, recurrences of this viral epidemic right now. What's important to recognize is that, like in every other sphere, and again, allow me to elaborate, for treatment of blood pressure or heart attack, for irritable bowel syndrome, for bronchial asthma, for diabetes, forget for depression and alcoholism for sure, it is the joint effort of life sciences and social sciences both that will help. The biological, pharmacological treatment methods or prevention methods and the behavioral, socio-behavioral means. And so, with this virus and its epidemiology, there is no go but to have both the wheels running jointly. The biological vaccine and the behavioral vaccine. The dream patterns have changed in COVID patients. There are some strange dreams that they come across. Have you come across anything of that in any of your patients whom you deal with? So it's totally depend on the way you are taking your surroundings or the situation you are taking. Sleep, what is dream? It's your unconscious mind that is telling you that you are whole day you are analyzing something, you are seeing something good or bad. I have seen people are coming that whole day before sleep also they were watching news, and new channel these days they are just showing all the bad things happening around the world. You are watching those kind of new channels and all bad activity, you are getting all bad news, and after that
your mind, your thought process is not able to think anything positive in life. After that, slowly and gradually, after a month, and it's now like 2 years, we are entered into the 2 years of pandemic. So our thought process had changed, and we started dreaming wrong things. But it can be changed through mindful practices, yoga and meditation, engaging yourself in fruitful, positive activity, spending time with near and dear ones. It's nothing very serious. It's just your thought process which had changed your dream pattern. The pandemic also changed a lot of lifestyle activities, and many children had problems of sleep because parents stayed wide awake till late in the night, and children also didn't have any activities to do. So how do you deal with children who had sleep problems? Yeah, children learn you very nicely. You have mentioned your question, your question that children don't take lectures. They copy whatsoever their parents are doing. So before giving any instructions or suggestions to children, I request proper suggestion to, I believe that the parents need proper counseling before that. Because if they will change their habit, if they will keep the environment in their home happy, they will talk good things, they will spend time with their children, they will reduce the screen time, they themselves will not watch those kind of channels very late, like till 9:30, 10, 11. They will watch some good TV or something, and if they switch off their TV by 8 o'clock, after that they can spend time with their kids. Reading activity they can do after dinner, they can do reading activity or some sort of play or game they can play. Then child will sleep nicely, and they will feel comfortable that somebody is there. Whatsoever is happening around the world, it's not going to affect us because my parents are there. They have only one thing in their mind, that if my parents are there, nothing can harm me. And so they will sleep comfortably. Dr. Kashyap, my question to you would be, young people who were COVID infected were told not to exert for a period ranging from 3 to 6 months due to the involvement of the lungs and the heart. There were instances of young people unexpectedly dropping dead. You have an armed forces background. How is this issue tackled in the armed forces where physical training is sometimes rigorous? First of all, we must understand that COVID-19 illness, just like any other viral illness, it affects all organs. Some are involved more, which express themselves clinically. So you get diagnosed with COVID pneumonia or COVID myocarditis or COVID thromboembolism. But it's a systemic illness. And also, as first speaker, Dr. Mohit, pointed out, that there could be a low-grade myocarditis resulting in subclinical myocardial dysfunction picked up by specialized tests like echocardiogram. These are the patients who are at risk of exercise-induced, or when they go beyond their effort tolerance, to develop arrhythmias, which they are vulnerable in any case. So a good marker for that is that if somebody recovers from COVID-19 or any other viral illness and suffers from profound fatigue, the definition of fatigue is feeling of being tired after minimal exertion, for which person is used to otherwise. So these are the patients where one should suspect there could be a subclinical myocarditis, which makes them vulnerable to all kinds of problems, including sudden death on exertion. So these are the patients who should be investigated in a targeted manner. And if there are signs and symptoms of myocarditis, they should be given prolonged rest. And there are some medicines also, which I will not go into detail here, but they can be put on some medicines also to make them recover, particularly those who are found to have impaired heart function. Here, because the context has come up, I would like to say that we must investigate and counsel patients in a targeted manner, because one of the hazards in any pandemic, and more so in the current pandemic, is that one should not overwhelm medical and healthcare systems, because positivity rate in some of our metropolitan cities is 25%, going up to 50%. If we were to advise all of them to undergo complete cardiac checkup, complete lung checkup, and other investigations, the medical system and the healthcare system will get overwhelmed. So it should be done in a targeted manner. Those patients who have profound fatigue or sequelae after
initial illness should be investigated. All others can follow routine healthful activities like good nutrition, remaining well hydrated, etc. You earlier worked as the general manager of one of the leading gymnasiums, the Tavarkas. Jim was in the news with the unfortunate death of sandalwood actor Puneeth Rajkumar. So much so that some states are proposing the mandatory presence of cardiologists and wellness experts at gyms. What are the precautions that COVID recovered people should take before hitting the gym? What kind of a precautions they should take? And the first and foremost thing that I would advise them is to take approval from their cardiologist or from their doctor. In case first they have to check their blood pressure, sugar, all the other parameters should be under check before they hit the gym. Secondly, if you are hitting a gym, it is very, very important that you're guided by a qualified nutritionist and a fitness trainer. As I said, most of the time, these trainers or dietitians, if they are, especially the trainers, if they are not qualified enough and if they are giving, a lot of time it is seen that they have been giving a lot of diet advice to their patients or to their clients, which should be avoided. And once you have recovered, it is important that you get your heart rate checked, your blood pressure checked, and your diet should be a properly disciplined diet. Once you feel there is no fatigue, you're not getting tired, only then you should think of going back to the gym. Otherwise, I would advocate start with a very, very slow paced exercises. We often hear that people say that their heart is an open book. Well, now it's literally so. Keeping tabs on your health with apps that track your heart rate, blood pressure, fitness, endurance can reveal a lot about your heart and efficacy of medication, lifestyle adjustments, and other treatments. These tools are trusted favorites of researchers and cardiologists. What are the advantages and disadvantages of having this app, especially in times of COVID, where everything becomes an open book? It's actually a very what do you say? It's a great invention. I feel it's something that can make your life really easy, but it can at the same time it can also make your life really miserable. Depends on how you look at it. Because we've had patients who have their pulse oximeter plugged in 24 hours, and then if they have access to your phone number, then best of luck, because you will get a call every hour saying, "Doctor, my heart rate is 65. Now it is 95." Then it became this. And if you have a sleep tracker or a fitness tracker, they'll call you up saying that my heart rate became 40 during my sleep. So, see, these things are normal. See, in science, nothing is absolute. We hear that the normal heart rate in schools you are taught is 72 beats per minute. That is not so. It is 60 to 100 beats per minute. It's always a range. Okay, your normal might be different from my normal. So each of us has a range, a physiological range, so to speak. Now, another problem that comes in with these pulse oximeters is that sometimes, especially in COVID, we've seen a lot of people developing something called extra beats or ectopic beats. So these are very often benign. There's nothing to worry about. So what happens is sometimes these extra beats come 1 and 2 beats. So if your heart rate is 70, it will be 35 normal beats and 35 ectopic beats. So when you put in the pulse oximeter, many of these pulse oximeters are not sensitive enough. So they pick up only the normal beats, and it will show you your heart rate as 35. And the patient gets alarmed and runs to the hospital where they take an ECG and they say that ECG is abnormal. So it causes stress. So this is the downside of it. The good side of it is you can monitor your heart rate. Somebody who is at rest and finds his heart rate has gone up to 150. That is an alarm. So especially elderly people who have episodes of giddiness, elderly people who have unexplained stroke, especially these watches that can detect the medical condition known as atrial fibrillation have come as a blessing for us. It's because many times patients land up with recurrent strokes and you're not able to find anything in the hospital evaluation. So we actually recommend people like this to get a watch that has AF detection technology on it, which even captures the ECG as well during that time. So if they find that their heart rate has shot up all of a sudden and it's irregular, they just need to record their ECG and they can transmit that to us via the app or as a PDF. And there, if you catch the AF, there you can start them off on anticoagulation, which you would not be having evidence to do so otherwise in the absence of this. So there is a definite benefit to it, but then
everything needs to be taken with its in a pinch of salt. You can't just say that this is without any flaws or that is without any benefit. So there are pros and cons, and I think with prudent use, technology will definitely help us, and that is the way going forward. I think patient education really helps here, rather than just as I told you, they keep calling you and telling you. I mean, instead of me telling them that "Arey kuch nahi hai yaar, don't trouble me," if I just take time out 2 minutes to tell them that, "Why, don't worry, see, your normal heart rate has a range, it's 60 to 100. Anything between this is fine. Inform me if it is less than 60 or more than 100." They are happy, they understand. He'll tell somebody of his own also the same thing. So I think we have moved beyond the era where we tell patients, you want to listen to the internet, you go take treatment from there, to coming up and telling patients, actually, at least what I do is I tell them, this is your disease. You have a lot of information available online. You have videos on YouTube. You have literature available on Google. You go, you Google it, you look at it, you come back with your doubts. Because I am happier if they come back to me with their doubts and I can clarify them, rather than they receive a WhatsApp forward from somebody and they end up believing that and stop the medication. Welcome back. Let me remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. We now move on to quiz number 2. This is quiz number 2. And the question is, which of the following is non-appropriate behavior in times of COVID? Mind you, non-appropriate behavior in times of COVID. A, wearing a mask when stepping outdoors. B, circulating social media posts without verifying the credibility of the source. C, washing hands regularly and properly. D, maintaining respiratory hygiene. The answers would be given at the end. We now move on to Health Nama, which is a highly popular and highly viewed segment of Health4All. These short capsules put together by my co-host Kishore Malviya in Hindi dealt with specific ailments and advice given by India's top experts. We'll now be running the Best of Health Nama by Kishore Malviya. हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं. लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम और एक्टिविटीज हमारे सीमित हो गए हैं. लोग वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में है, तो हमारी एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है और हम घर से ही काम कर रहे हैं. तो ऐसे में, और खाने में कमी नहीं हुई है, बल्कि खान पान बढ़ गया है हमारा. ऐसे में क्या सुझाव है, हम कैसे अपनी एक्टिविटीज, कम एक्टिविटी और खान पान में कैसे संतुलन बनाएं? क्या सुझाव है आपका? जी, किशोर जी आप सही कह रहे हैं.
प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम कहीं जा नहीं रहे, घर पर ही हैं, अब तो बाहर भी नहीं जा सकते, वीकेंड्स पे काम वैसे भी घर से कर रहे हैं, और रिक्रिएशन के बहुत कम सोर्सेज रह गए, लोगों से मिलते नहीं हैं हम, अपने घरों में टेलीविजन कितनी देर देखेंगे या कितनी देर फोन। Food is a major way of recreating ourselves, of pleasuring ourselves, so it becomes a way of venting out your depression, or feeling better, or feeling a little more high. Food gives you a little bit of a high. So mostly people use food in situations like this to feel better or to use it for pleasure. That whole concept is a skewed concept, because वो पूरा concept ही गलत है। खाने का काम आपको pleasure करना नहीं है, खाने का काम बहुत ही aberrated और बहुत ही खराब anecdotal example होगा, आपको fuel करना है, जैसे fuel एक गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस, जो माइंडफुलनेस जिसकी हम बात करते रहे, कॉन्शियसनेस अबाउट योर फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम से ये सोच लेना कि अब मैं कम खाऊंगा या मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा या मैं फास्ट करूंगा, अच्छा है, बट पहले आई थिंक द बिगिनिंग स्टेप शुड बी टू ईज इनटू अंडरस्टैंडिंग दैट योर consumption of food is far more than what you require, especially when you're saddled in your homes and not doing anything much. So therefore, this sort of acceptance that you have to reduce your food intake and you have to be mindful of what you're eating is very important. So ये एक हर वक्त जो लोग घर पे हैं तो कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ स्नैक्स बनाते हैं, या कुछ अब तो ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हमें बच्चों में और बड़ों में थोड़ा सा नलिफाई करके उनको ये समझाना पड़ेगा कि खाने को हमेशा आप प्लेजर के लिए नहीं यूज करते हैं, और इस सिचुएशन से बचने का तरीका खाने में नहीं ढूंढना है हमें। इस सिचुएशन को ईज आउट करने के लिए लोग जो खाने बैठ जाते हैं वो जो है उसको कम करना है। कि क्या चाय और कॉफी हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है? क्योंकि आजकल जब वर्क फ्रॉम होम चलता है तो लोग चाय और कॉफी पर टूट पड़ते हैं, खाना से ज्यादा चाय और कॉफी लेते हैं, तो क्या ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है? थैंक यू किशोर जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली चाय और कॉफी, हमारे जैसे आपने बताया, कुछ लोग ऑलमोस्ट अराउंड 8 to 10 या इवन मोर कप्स ऑफ टी एंड कॉफी पूरे दिन में पीते हैं। तो एक समझना जरूरी है, जैसे आपने पहले बताया कि टी जो है इसमें स्पेशल जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसको एपिको गैलेक्टिन्स बोलते हैं, जो काफी हद तक वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं। पर कौन सी चाय? ये उबली हुई दूध वाली चाय जिसमें 2-3 चम्मच शक्कर पड़े हैं, वो वाली नहीं। केवल ग्रीन टी लेंगे तो दैट कैन बी फंक्शनल। इसके साथ यदि हम दूसरे फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपने बोला सिनेमन है, क्लव्स है, सौंफ है, अगर ये हम डालते हैं तो ये एक डाइजेस्टिव बनता है। टी एंड कॉफी इज अलाउड, स्पेशली कॉफी में कैफीन है, तो थोड़ा सा मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने के लिए कॉफी अलाउड है, पर इसका रिस्ट्रिक्शन है नॉट मोर देन 2 cups a day, राइट? और क्योंकि ज्यादा भी करेंगे तो फिर से हाइपर एक्टिविटी होती है और इसके दूसरे प्रॉब्लम्स भी है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पोर्शन कंट्रोल करना, कि माइंडफुली अगर आप 1 कप मॉर्निंग में ले रहे हो और हम ये मंत्र हमेशा से फॉलो कर रहे हैं, आज से थोड़ा कम, तो यदि आप 2 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं तो 1 चम्मच शक्कर से काम चलाइए, 1 चम्मच ले रहे तो आधी चम्मच से, एंड रिड्यूस योर शुगर कंटेंट। एक लाइफस्टाइल मेजर ये बेस्ट है कि यदि टी और कॉफी में हम शक्कर डालना बंद कर दे तो ये सबके लिए इजी रहेगा, क्योंकि दिस इज द थिंग व्हिच वी आर कंज्यूमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर ये डर हमारे मन में है कि आने वाले समय में ये हमें और तंग कर सकता है, इसके कई नए वेरिएंट आ सकते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ सकते हैं, अभी कुछ श्योर नहीं है, तो इस डर को हम अपने से दूर कैसे रखें और इस डर से कैसे बचे? बाबा जी, थोड़ा डर होना बहुत जरूरी इस टाइम पे, क्योंकि जैसे ही कोविड की वेव थोड़ी नीचे आती है तो सोशली इनअप्रोप्रिएट या कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी हम ज्यादा एंगेज करना शुरू करते हैं, और जैसी वेव आती है तो एक पैनिक की भावना से हम फिर उस पे जंप करते हैं कि अब इसको ना हो जाए या ये ना हो जाए, या ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स स्टार्ट व्हेन द वेव इज गोइंग अप।
पर जब वेव नीचे होती है तब दैट इज द टाइम जब हमें सबसे ज्यादा काम करना होता है, और उस टाइम पे हम बहुत ही लैक्स्ड होते हैं, परवाह नहीं करते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेते हैं, और उसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा वेव का जैसे प्रोग्रेस हो रही है, जैसे थर्ड वेव। वन ऑफ द रीजंस इज ऑल्सो बिकॉज जैसे ही थोड़ी सी छूट टाइप मिलती है हमें कोविड की वेव से, हम सब कोई ट्रैवल करने लगता है, कोई बाहर शॉपिंग के लिए जाना चाहता है, कोई एक्सप्लोर करना चाहता है, हम सबको बाहर लोगों से मिलने लगते हैं, तो जो कि एक नॉर्मल चीज भी है, पर it is the time before the wave that we need to be more cautious so that the wave doesn't come at all than जब वो wave hit करती है और तब पैनिक करें हम। कि कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जिनको गैस या पेट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो दूध या अन्य डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। कुछ डॉक्टर कहते हैं नहीं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, कोई भी राय जब दी जाती है तो सारी परिस्थिति समझनी पड़ती है मरीज की, उसके क्या लक्षण हैं, कब से हैं, किस बैकग्राउंड में हैं। लेकिन मोटे तौर पे मॉडर्न मेडिसिन में प्योर मिल्क, दूध को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है, एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। तो हम लोग मोटे तौर पे राय देते हैं कि हर इंसान भोजन वही करेगा जो उसको अपने अनुभव से अनुकूल बैठता है। लेकिन स्पेशली जब डाइजेशन के लक्षण हो, गैस हो, ब्लोटिंग हो, इनडाइजेशन हो, स्टूल्स में समस्या हो, तो कुछ समय प्योर मिल्क रोक दिया जाता है। हमारे यहाँ कर्ड, दही, पनीर, इस सबको अच्छा समझा जाता है, लेकिन होल मिल्क को कई परिस्थितियों में, स्पेशली कई बड़ी आंत की बीमारियां, उसके दौरान जब वो एक्टिव होती हैं, तो कुछ समय के लिए पूरे दूध का सेवन को निश्चित रूप से रोकते हैं। तो वैसे तो परिस्थिति को पूरी तरीके से जांच करके समझ करके राय दी जाती है, लेकिन प्योर होल मिल्क जो है कई इंडिविजुअल्स उम्र के साथ टॉलरेट नहीं करते हैं। लेकिन उसी सांस में हम लोग ये बात भी समझाते हैं कि कई ऐसे वृद्धावस्था वाले लोग हैं जो केवल दूध के ऊपर जिंदा है, तो यदि उनको वो माफिक बैठ रहा है, टॉलरेट करते हैं, तो उसमें कोई रोकने की बात नहीं होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज देखा गया है, कोविड इन्फेक्शन के बाद बहुत लोगों के में लिवर इन्फेक्शन की शिकायत आती है। जीजीटीपी बढ़ गया या एलटी रेशियो बढ़ गया, इस तरह के कई समस्याएं आती है। क्या इसकी कोई और वजह है या कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम है? देखिए, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ना लिवर में इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर होता है। ये मल्टीपल रीजन से हो सकता है। तो जब भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा होता है, आप एक तो बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं कि क्या ये इंसान पहले अल्कोहल लेता था। दूसरे कारण हेपेटाइटिस बी, सी जो कॉमनेस्ट रीजंस होंगे। कोविड स्पेसिफिक अगर हम देखें तो दो इश्यूज होती है कि जैसे कोविड एक तरह का वायरस है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, जैसे डेंगू में एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है, तो कोविड में भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि ये जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिसके जरिए ये लंग में घुसता है, ये ACE2 रिसेप्टर्स इंटेस्टाइन में, बिलियरी सिस्टम में, पैंक्रियाज में, लिवर में, हर जगह होते हैं। तो एक कारण वो होता है। दूसरा, ड्रग इंड्यूस्ड जो काफी सारी दवाइयां यूज की जाती हैं, खास करके इसमें रेमडेसिविर हेपेटोटॉक्सिक मेडिसिन एक तरह से होती है। तो एक डेफिनेट लेवल से अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हो तो रेमडेसिविर यूज करना मुश्किल होता है, और जब हम रेमडेसिविर यूज करते हैं तो एसजीओटी एसजीपीटी को मॉनिटर करते हैं। और इसी तरह से और भी मल्टीपल मेडिकेशंस होती हैं जिसके कारण एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है। अगर ये एक निश्चित लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ा है तो ये ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। अगर ये कोविड रिलेटेड है, टाइम के साथ ये नॉर्मल आ जाएगा। अल्कोहल की बात बहुत हुई आज, और पहले भी अक्सर होती है। अल्कोहल को एक विलेन के रूप में देखा जाता है मेडिकल वर्ल्ड में, जो है भी। अल्कोहल प्रेमी थोड़े नाराज भी होते हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा टी कॉफी लेने से और खास करके बेड टी लेने से भी क्या लिवर पे असर पड़ता है? कॉफी का अगर आप डाटा देखेंगे तो प्लेन कॉफी, इट हैज बीन फाउंड टू बी एंटी फाइब्रोटिक फॉर लिवर विदाउट मिल्क। इफ यू टेक अ ब्लैक कॉफी, up to 5 cups of coffee has been found to be anti-fibrotic, that liver को healthy रखने में मदद करती है। Green tea with its antioxidants, plain coffee, they have been found to be good for liver.
नॉट बैड. बट जो अगर आप एक कॉफी ले रहे हैं जिसमें आप नॉर्मल तरीके से चीनी ले रहे हैं, नॉर्मल दूध ले रहे हैं, सो देन ईच कप ऑफ कॉफी, जैसे ये लेते हैं, I'll take it as an example here, if you take a milk वाली कॉफी like this, and then each cup is around 150 kilocalories. तो बेसिकली आप जो अपना खा रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, इसके अंदर कॉफी से ज्यादा आप अपनी कैलोरीज चीनी डाल के साथ में ले रहे हैं, और आपने 5 कप लिए तो 750 किलो कैलोरीज आपने अपनी एक दिन में जस्ट कॉफी से ले ली, कॉफी या टी से ले ली, जितनी आप पी रहे हैं. सो यू आर नॉट काउंटिंग दोज कैलोरीज, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योरसेल्फ एंड पुशिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स NASH. बट इफ यू टेक अ ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर और अ ग्रीन टी विदाउट शुगर, दे आर एक्चुअली गुड फॉर लिवर, नॉट बैड. अगर किसी को गैस्ट्राइटिस अटैक होता है और बहुत तेज अटैक होता है, तो इमीडिएट रेमेडी क्या है? सर देखिए, जैसे डॉक्टर पीयूष ने बोला है और हमारे अदर पैनलिस्ट ने बोला है, गैस्ट्राइटिस एक ब्रॉड टर्म है. गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि भाई नाभि के ऊपर के एरिया में आपको दर्द होना. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स नॉर्मली यहाँ जो दर्द होता है 3 कारण से होता है. अगर मैं ब्रॉडली देखूं, एक आता है वहां पेट, जिसको आप बोल रहे हैं गैस्ट्राइटिस, जो कि पेट में आपको सूजन, मतलब इट्स इन्फ्लेमेशन, लाल रेडनेस हो गई है पेट में जिसे. और दूसरा जो यहाँ दर्द आता है, जो सिवियर पेन जो आता है ये एरिया में, 3 कारण है जिससे मैं नॉर्मल कॉमन देखता हूँ. एक है अगर आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन का दर्द आता है, दूसरा आता है पेनक्रियास का, और तीसरा बहुत रेयर थोड़ों में आता है हार्ट का दर्द. तो अगर आप गैस्ट्राइटिस लेके चलें, नॉर्मली गैस्ट्राइटिस में ये होता है कि अगर मेरे पास जो पेशेंट कैसे आता है गैस्ट्राइटिस का, वो आता है भाई आपने खाना खाया, उसके बाद पेट में जलन होना, पेट का फूलना, डकारे आना, सीने में जलन, चेस्ट बर्निंग. तो ये मैं इनको एसिडिटी के लक्षण बोलूंगा. तो नॉर्मली जब ये ऐसे जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनके इमीडिएट रेमेडी के लिए एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. जैसे आपका पेंटोप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, ये हम एसिडिटी की गोली देते हैं. और इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम सिरप्स देते हैं, जैसे जो कॉमन अपना ब्रांड बहुत है, जैसे एक जेल्यूसिल एमकेएस, ऑल दीज टाइप, दीज आर द थिंग्स जो हम नॉर्मली ये पेशेंट्स को देते हैं गैस्ट्राइटिस के. अगर आप दूसरा ग्रुप लें जिसमें बहुत सीवियर पेन हो रहा है, उसमें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर पेशेंट को बहुत सीवियर, ही शुड गो एंड मीट द डॉक्टर. बिकॉज जो गॉल ब्लैडर का पेन होता है वो यूजुअली रात में आता है, बहुत सीवियर होता है. पेनक्रियास का पेन भी इज अ वेरी सीवियर पेन, जिसमें यूजुअली इन मोर कॉमन रहता है, जिसमें या तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या वो पेशेंट में होता है जो क्रॉनिक अल्कोहल लेते हैं. ये 2 ग्रुप में बहुत सीवियर पेन आता है, इनको भी हॉस्पिटल को जाना चाहिए. अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो दवा लेते हैं और दवा से उसको कंट्रोल में रखते हैं, और उन्हें कोविड इन्फेक्शन होता है, तो ये कितना खतरनाक है? और दूसरा, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये भी है कि कई लोगों में ये देखा गया है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, बीपी की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कोविड इन्फेक्शन के बाद जब वो ठीक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसके बाद उनको हाई बीपी होने लगता है. तो ये समस्या क्या टेम्पररी है या फिर उनको दवा पे, मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा? देखिए सर, इसमें क्या है कि जिस पेशेंट को पहले से बीपी है और बीपी की मेडिसिन रेगुलर ले रहा है और वो कंट्रोल चल रहा है, उसको सडनली पता चलता है कि कोविड है, फीवर है. उस फीवर में अर्ली स्टेज जो रहती है, जिस टाइम पे फेब्राइल इलनेस स्टार्ट है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएट टू द लोअर साइड. तो जो पब्लिक को मेरा मैसेज ये रहेगा कि जो पेशेंट ऑलरेडी बीपी की दवाइयां ले रहा है, उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ अर्ली स्टेज में, तो बीपी मॉनिटरिंग इज द फर्स्ट पॉइंट. If required, the BP medicine dose should be reduced in the early phase, and after that, when the recovery starts, then again the blood pressure may shoot over the level which is he prevented by the same medicine. Then that time may require the increased dose of the medicine. So during this COVID illness, the patient should monitor the blood pressure from the starting of the illness to the recovery, and may after for 3 months also, because after this viral illness, then hypercoagulable stage will go on proceed in the body, that may increase the blood pressure by the sympathetic overdrive also. So blood pressure management requires the BP monitoring from starting of the illness till the recovery, and post recovery 3 to 6 months.
एक कोविड डायबिटीज जो टर्म बना है कि कोविड इन्फेक्शन होने के बाद उनको डायबिटीज हो जाता है, तो क्या ये परमानेंट होता है, उनको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा या ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है? सर, इसके अंदर ये है कि मॉनिटर करते रहना चाहिए, परमानेंट है या वो टेम्पररी है, इसको स्पेकुलेट करे के बिना आप मॉनिटर करते रहिए। अगर लग रहा है कि डायबिटीज आपका कंट्रोल आ रहा है, शुगर नीचे होने लग रहा है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपका शुगर फॉल हो रहा है, तो उस केस के अंदर दवाइयाँ आपको कम करके मॉनिटर अपना चालू रखना चाहिए। आप डायबिटीज की दवाइयाँ कम कर दीजिए, शुगर मॉनिटरिंग कीजिए, उसके बाद कई चीज़ों में रिवर्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि इलनेस का स्ट्रेस हो गया, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ गया, जो हार्मोन्स इन्फ्लेमेशन में बढ़ते हैं, वो इन्फ्लेमेशन मतलब स्ट्रेस, बॉडी को जब भी स्ट्रेस होगा तो एक्ट करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से आएगी? शुगर से आएगी, तो शुगर बढ़ेगा शरीर में। और दूसरा है कि उससे रिलेटेड मेडिसिन, अगर कोविड सिवियरिटी की तरफ था, स्टीरॉयड दिए हैं, तो वो कंडीशन वर्सन कर सकती है। तो एक बार वो चीज़ें निकल गई तो हो सकता है कि शुगर कंट्रोल वैसे ही आने लग जाए। तो कईयों की रिवर्स भी हो जाती है, कईयों की कंट्रोल हो जाती है, कईयों की वर्सन हो जाती है। कई मरीजों में ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज नहीं बने। ऐसा क्यों? क्या ये सच है या ये एक दो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस? नहीं, होता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि ओमिक्रॉन के बाद एंटीबॉडीज तैयार नहीं होती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली इवन आफ्टर वैक्सीन, कभी वैक्सीन लेने के बाद भी एंटीबॉडीज तैयार नहीं होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप फिलहाल जैसे आप रूटीन जो कर रहे हैं आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीबॉडीज की टेंशन मत लीजिए। हालांकि एंटीबॉडीज सब लोग जो टेस्ट करते हैं वो सिर्फ साधारण एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। वी रिक्वायर टू चेक आवर स्पाइक एंटीबॉडीज। They are different kind of spike protein antibodies which we called, and you just require to focus them. If you have those spike protein antibodies, then there is nothing to worry. Okay? हम जो एंटीबॉडीज जो पूछते हैं लैब में, हम सिर्फ जाके पूछते हैं कि आपको एंटीबॉडीज चेक कराना है कोविड का, वैसे नहीं होता है। वो स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज एक दूसरी होती है और यूजुअली वो पाई जाती है। कोविड इन्फेक्शन के बाद बहुत से लोगों में देखा गया है, शिकायत हुई है कि सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, चेस्ट पेन है, कईयों में तो ये भी देखा गया है। क्या ये कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी और वजह से है, और इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं ये कोविड से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर ये किसी और विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रशांत सक्सेना भी बोल रहे थे कि अगर उनको विटामिन डेफिशिएंसीज है और वो सप्लीमेंटेशन दिया जाता है तो उसके बाद में उनकी सिम्टम्स वगैरह या वीकनेस ये सब काफी कम हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम ये देखें, हम लोग कई बार जब ये पेशेंट्स आते हैं और उसमें हम सीरम विटामिन B12 कराते हैं तो वो बहुत ही कम पाया गया है। और इंडिया में तो हमें पता ही है कि डिस्पाइट द सनलाइट बहुत सारे पेशेंट्स में विटामिन D डेफिशिएंसी है। सो करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज विटामिन D, विटामिन B12 करके हम ये सारे सिम्टम्स काफी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। दूसरा ये कि हाँ, ये कोविड-19 से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये कोविड-19 से अगर रिलेटेड है तो फिर इसको पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम और फिर अकॉर्डिंगली फिर मैनेज किया जाएगा। अनीशा जी, लोगों में इमरजेंसी कंट्रासेप्शन और मेडिकल एबॉर्शन को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जी, तो दोनों के नाम से ही हमें अंतर समझ आ जाता है। अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन समझे तो उसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, और मेडिकल अबॉर्शन समझे तो वो अबॉर्शन है। जिसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि इट विल प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेरी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है इफ आई हैव हैड एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट। वेयर एज मेडिकल अबॉर्शन का मतलब ही है कि अगर मुझे एक अनचाहा गर्भ मैंने धारण कर लिया है तो मैं उसका अबॉर्शन कैसे कर सकती हूँ। अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव कर लिया है, तो उसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का कोई रोल नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन का रोल प्रेगनेंसी होने से पहले है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और मेडिकल अबॉर्शन का रोल तब है जब मेरे पास एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है और मैं उसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ।
भारत में एनीमिया डिटेक्टिंग एक बड़ी चुनौती है, ऐसा क्यों, खासकर रूरल इंडिया में? अनीमिया की जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको मालूम है कि एवरी अल्टरनेट वुमन इन द कंट्री इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, and which is a huge number, roughly 50%. Now the major reasons for high level of anemia in India is that people are consuming food which does not contain enough iron and minerals. That's why under the program, one of the important strategy for preventing and controlling anemia is giving supplementation iron across the board. Every woman is asked to take something called as the iron folic acid supplementation, and particularly during pregnancy and lactation time, when the requirement of iron is very high, and you must have seen all the national programs, they recommend IFA supplementation. There is a special program by Government of India which is called as the weekly iron folic acid supplementation. Again, the hypothesis is that we are consuming less iron. Our food contains less iron. In order to address that, the less consumption of the iron folic acid, supplementation is required. Keeping in this point in mind, even the Government of India has also came up with a big program of food fortification. Like wheat is being fortified with iron, rice is being fortified with iron. Even the salt which we are consuming every day, even that is being talked about in terms of fortification. Double fortified salt, which contains iron and salt. So the point, what I'm trying to say is that we as Indians, consuming less of iron than what is required by the body. रूरल इंडिया में महिलाओं के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या स्थिति है इस समय, और क्या ये संतोषजनक है स्थिति? जो अभी जैसे कि अभी जो कोविड महामारी के पश्चात जो हमें पता चला कि जैसे कि जो बहुत सारी सर्विसेज हैम्पर हुई थी जिसमें और हमने देखा कि उसमें जो ANC कवरेज हो या फिर जैसे जो फर्स्ट टाइमर से ANC रजिस्ट्रेशन वो कुछ चीज़ें जैसे ड्रॉप आउट हो गई थी, क्योंकि जब फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान जो है कि जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो एक चीज़ हुई थी। और उस समय जो डिलीवरीज जो है अभी जो फिलहाल जो डिलीवरीज जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो डिलीवरीज हो गई थी वो उस समय कम हो गई थी, ठीक है। होम डिलीवरीज का प्रमाण कुछ स्टेट्स में बढ़ गया था, और जो अपनी जो हेल्थ जो फैसिलिटी है जो सर्विस दे रही थी वो फैसिलिटी डिवाइड हो गई थी। और उसके बाद में जैसे कोविड वैक्सीनेशन चालू हुआ तो उसमें भी फैसिलिटी थोड़ा डिवाइड हो गई, तो उसके अंदर थोड़ा सर्विसेज जैसे इफेक्ट हुई थी। बट ये ओवरऑल जो काफ़ी स्टेट्स में जैसे उन्होंने अच्छा कुछ काम किया है। एक स्टडी के अनुसार प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मेजर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस झेलने वाली कम उम्र की महिलाओं में 48% ऐसी 48% ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है। हम यही देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो केयर सीकिंग है, उनको हॉस्पिटल ले जाने का जो समय है, चाहे वो किसी भी तकलीफ के लिए हो, और खासकर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो वजहें हैं उनके लिए देखा जाता है कि उसमें बहुत डिले होता है। ना तो महिलाएं खुद ही अपने आप की प्रॉब्लम्स को समझ पाती हैं, और ना ही उनको अक्सर ये सपोर्ट मिल पाता है कि वो ठीक तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना, चाहे वो डिलीवरी के टाइम पे भी क्यों ना हो। अक्सर ये माना जाता है कि डिलीवरी के लिए तो उनको हॉस्पिटल ले ही जाया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में, परिवारों में, खासकर आदमियों में जो महिलाओं के पार्टनर्स हैं, उनमें हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि कितना ज़रूरी है महिला की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, और ये आइडेंटिफाई करना कि कब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। तो मेरी राय तो यही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमको कम्युनिटी में, महिलाओं में अपने आप में ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि उनकी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है,
और उनको कब मेडिकल केयर की जरूरत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के अनुसार सिर्फ 10% पुरुष ही कॉन्डोम यूज करते हैं और 40% महिलाएं प्रेगनेंसी रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन कराती हैं। क्या फैमिली प्लानिंग केवल महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये सिर्फ रूरल नहीं, अर्बन एरिया में भी हो रहे हैं। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो नया NFHS डेटा आया है इसके तहत, और पुराने NFHS सर्वे भी अगर हम उठा के देखें तो यही इसी तरह का गैप नजर आता है। जो बहुत सारी बात अजय जी, डॉक्टर राजेश, अनीशा जी ने भी कही, a lot of this is associated with gender and social norms। किस तरह के पुरुष और महिला के बीच में पावर इम्बैलेंस रहता है, किस तरह पुरुष किस चीज का कंट्रोल रहता है एक हाउस होल्ड में, इंडिविजुअल लेवल में, कपल लेवल में, स्ट्रक्चरल लेवल पे, जिसका हेल्थ सिस्टम्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिस तरह की बातें डॉक्टर राजेश और अनीशा जी ने भी कही कि क्वालिटी ऑफ केयर, उसका भी एक स्ट्रक्चरल दायरा है कि जो हेल्थ सिस्टम्स के खुद ही लोग हैं वो किस तरह से एक औरत को देखते हैं, एक अनमैरिड वुमन जिसकी प्रेगनेंसी हो गई है उसको कैसे देखते हैं। और अगर हम फैमिली प्लानिंग के अंदर जो आपने सवाल पूछा है, औरत और महिला के बीच में कॉन्डम इस्तेमाल अभी भी कम क्यों किया जा रहा है, इसके बहुत सारे सप्लाई साइड इश्यूज भी हैं, जो कि कॉन्डम की अवेलेबिलिटी, डिस्पोजल का मसला, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी भी बहुत स्टिग्मेटाइज्ड हैं ये सारी चीजें। बट ये एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड बात है कि औरत ही कराएगी, स्टरलाइजेशन कराएगी, नहीं तो गोली लेगी, नहीं तो कुछ और, मतलब या अबॉर्शन भी। मतलब वुमेन्स बॉडी का जो मेंटल एंड फिजिकल डिटीरियोरेशन है या एक्सप्लॉयटेशन है वो एक एकदम नॉर्मलाइज सी बात है। तो ऑल्सो फैमिली प्लानिंग हमेशा से ही एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच से चलता है, पॉपुलेशन कंट्रोल टूल के हिसाब से, ना कि एक राइट्स बेस्ड अप्रोच। जैसे अबॉर्शन भी जैसे एक राइट होना चाहिए, उसी तरह फैमिली प्लानिंग भी एक राइट होना चाहिए। बट जब आप महिला का निर्णय करने का जायजा एक घर में, खाने से लेकर पैसा खर्चने से लेकर कहाँ क्या करना है सबसे लेकर, अगर आप वो ही नहीं बदल पा रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग के डोमेन में आते आते कॉन्ट्रासेप्शन कब कैसे यूज करना है, इनफैक्ट सेक्स का टाइमिंग, मेरा मन नहीं है, औरत का यही बोलना इतनी बड़ी बात हो जाती है कि अब्यूज, फोर्स सेक्स, ये सारी चीजें हम सब जानकार हैं इस बारे में। तो इसीलिए मतलब बहुत सारे सोशल और जेंडर नॉर्म्स के चलते, नॉर्मेटिव बिहेवियर्स के चलते, there are reasons because of which women are not able to control their bodies, their lives and their reproductive decisions, to be in specific. मेंस्ट्रुएशन तो नेचुरल चीज है, लेकिन इसके साथ स्टिग्मा क्यों जुड़ा है, कैसे दूर करें? कोई भी चीज जो भी which is around sexual and reproductive health, that is always a hush-hush topic, right? Like we don't talk about it, and especially when it comes to women or people who identify themselves as women or from the trans community, especially the menstruators. So they go through, they are always stigmatized क्योंकि वो already एक marginalized community से belong करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा significant factor which contributes to this hushiousness of period being not spoken about, or and even families maybe. So I feel that patriarchy has a significant role to play, and the one way to do away with this is to fight patriarchy in our own capacities and capabilities, and everyone has their own way of doing it. I believe there are communities, the community I worked with in rural Gujarat, that have very different cultural norms, and I come from Assam where I had very different cultural norms, right? So our ways of fighting will also have to be very different, and also at the same time, we cannot design one solution for all the communities, especially when we're working with communities, when we're working with women across the country. So everything has to be very contextualized.
Welcome back. Let me remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube from all over the world. We now have quiz number 3. Well, quiz number 3, the question is, which of the following is true concerning changing food habits during the pandemic? A, the trend of binge eating while watching television and laptop screens has gone up. B, intake of high-calorie food, fried food, had increased among children and adults alike. C, the amount of energy spent is less than the amount of calorie intake. And D, all the above. The answers should be given at the end of this session. Now, welcome again to another session. We now have Your Health Counter, anchored by Dr. Sudeep Srivastava, founder of Heal Foundation, and one of top health communication experts in India. Your Health Counter connects with India's top medical, nutrition, wellness, and public health experts, policymakers, to do a straight talk on the latest topics and to get an insight on disease prevention and cure or any health issues, patient issues, etc. Here is the best of Your Health Counter. What, in your view, is leveling up health? What is your view? In your view, is the solution to reduce health inequities? One of the lessons from COVID pandemic is that how we look at disease, how we look at health. So one major conceptual shift of understanding health should be understood as one of the major health security, the concept of health security. Health security should be considered as a national security. Or health security, the security of the people should be equivalent to border security. So how we look at national defense, national security, we should give same importance for the human security and health security. This is one of the shift in changing is occurring. That means our investment in healthcare should be tremendously, it should be improved, because right now, if you take the case of India, it's approximately 2% of the GDP. And it has to reach some level of health implication, some basic level of health equity, we have to immediately increase into 5% of the GDP, and eventually it has to go up to 14%, 15%. If you take the case of example of Sri Lanka, one of the best example of health investment, they went up to 14% of the GDP for health investment. So unless we look at primary health care, unless we look at Health4All, unless we look at universal health care, and this is a political question, I'm not denying that, and it needs to be looked upon. The COVID pandemic is a very important, it's a reminder for us. For example, the amount of the economic impacts, it's not the health alone, because the lockdown for 2 years and probably trillions of rupees worth of economic progress lost. So opportunity cost of health, lack of investment in health is phenomenal. So the lesson to be learned is that we have to boost our investment in diagnostic basic care and also access to healthcare, strengthening our primary healthcare centers, and also investing in looking at the labs which will follow, which will carefully monitor the infection, which way it is going up, and also looking at the genetic mutation of the virus itself. When you talk about COVID pills, like starting from
because most of these COVID pills are under emergency use authorizations. So first, particularly from a general public point of view, what would this mean, emergency use authorization, from their perspective, what they should understand about it? Second would be like so many guidelines and counter opinions coming on pills. So how much people should actually absorb and believe? Say in case of even you just spoke about molnupiravir, and that has started with remdesivir also earlier. When remdesivir started, WHO gave a different statement, and then now it is in regular practice by the practitioners are saying. So there is always also a clash of opinion between the researchers, scientists, and the practicing doctors who are seeing something else or some better benefits while they're treating patients, particularly when limited options are available, sir. So how can you answer this, particularly what people should know about emergency use authorizations? See, normally a drug takes couple of years. Vaccines also take couple of years to. So whether it is a drug or a vaccine, these are all early use and rapidly developed vaccines. Normally, if you see in history of medicine, vaccines took 8-10 years to develop or 20 years to develop. Similarly, for any new therapy to come, it takes a couple of years to develop. So obviously, these are all repurposed drugs which have been used overnight. But the data generated, as I said, has been reasonably robust. And the new age pills which are coming in, whether it is the latest data on remdesivir, the latest data on molnupiravir, that is saving lives. See, we started with the story of hydroxychloroquine, ivermectin, and the early remdesivir days when there was no data. So we started with nothing, and only we found out that dexamethasone worked only in severe cases, and oxygen and prone position and nursing care. So that is how therapy evolves. So when we have a new disease which is evolving with new strains, obviously we will have new age agents. We have to choose the most vulnerable group. So for me, as a treating doctor, it's a very simple algorithm. Look, for lay people, they should go by their doctor's advice, because every patient is different and the profile of every patient is different. So if somebody is asymptomatic, is 85 years old, has just mild hypertension treated with one tablet, completely asymptomatic, CBC, CRP, nothing is needed. You just need observation. You need temperature monitoring and saturation monitoring. But the same 85-year-old has a little bit of kidney issue, has hypertension, diabetes, which is very high, probably, and is symptomatic with persistent fever of 100 and above, probably will need, if can be managed at home, an oral pill, or may need to go to a hospital and need an injection. So every case is different. For me, who is most likely to die? For me, every human life is important. So the idea of using these patients and these pills are in the most vulnerable groups. Unfortunately, what happens is, lay people feel that this is like a magic pill and the pill gets used indiscriminately. And that's where the Lakshman Rekha has to be drawn by the treating doctors as well as the lay people, to draw a line that if my doctor is saying that this pill is not good for you, this injection is not good for you, you don't need to take it. That's where we really need to self-regulate, which is why I think I must admire Government of India has been very prudent, but their approach has been very socialistic in nature for most of the people, most of the time. While for us as clinicians, for every person living with COVID matters, and every life is equally important. So saving that life in the vulnerable group who's likely to deteriorate definitely matters. And if there's data and evidence to show that it might be saving lives, and all these newer therapies definitely have data to show that at least in the Delta variant, they save lives. So if there's lung involvement, they save lives. If there's just a nose and throat COVID, see what is the Omicron today? It's predominantly a bad sore throat. And if it's a bad sore throat, I think, it's a little more worse sore throat with fatigue. Most people will do very well, whether you treat them or you don't treat them. It's symptomatic treatment. Let me be very transparent. I know pharmaceutical industry may not like what I'm saying, but I must compliment them that they have got these therapies to save people who are most at risk to die. And that is where you should use it. So I think we need to really know when to use, what works, in whom it works, how it works. With COVID is the new mindset, but the challenge what we see is living with COVID
with fear and anxiety. That is one of the biggest challenge which societies are facing. And you also said that if we change the whole goalpost and we say that is not reporting the number of cases but the number of hospitalization. So do you think that this will be able to handle and tackle, because whether it is Omicron or other new variants, we have seen the hospitalization rates going down. So this can be one of the ways which governments, particularly Indian government, should look at. See, when we look at the COVID pandemic, we are looking at there are several variants of concern. It's not only the Omicron we are talking about. We had an alpha variant, beta variant, gamma variant, delta variant, now Omicron variant. And we look at the genetic mutation, we're talking about almost more than 1,300 genetic variations. So this is the magnitude we're talking about. And also COVID pandemic, we talk about long COVID. After the infection also, you had to live with the side effects, after effect of that. So cumulatively, the COVID pandemic is really, we are talking about a syndrome. And in syndrome, we are living with many variants. And all these variants exist. Even if we talk about Omicron, Delta is existing. Delta didn't go away. And also Beta didn't get much media attention. Alpha didn't get much media attention, even though both of them are declared as variant of concern by WHO. So how people understand the infection also varying. Now, the moment Omicron came, there is much more media attention than Gamma, Beta variant. So this is the interesting part of it. And also we talked about the fear. The fear we talk about March, January, February of 2020, and today there is a significant variation. So earlier people are really locked down, and I see in Pune and Mumbai completely the streets were empty. And for days together, the transport system is completely standstill. So that way, that fear and today's fear, the shift moving towards that we have to find a way to live with an epidemic. Why we can keep the infected group on hold and give prioritization to those who are more vulnerable and co-virgins who have not been infected. Yes. We know science. See, science is evolving. Daily हमने evidence आते हैं. Daily 100 publications, more than 100 publications आ रहे हैं. So we must use. ऐसा नहीं कि जो कल डिसीजन लिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते. So based on the current evidences, you asked about the WHO. कि WHO why ignoring? In that statement I have already mentioned this. See, WHO last year when many these government agencies said that natural infection is protecting, in March 2020 they said no, there is no guarantee of natural immunity. You may get reinfection. So we don't have any evidence because this virus is only 3-month-old virus, right? Then in May 2021 they released their advisory and they said that vaccine, natural infection is also providing immunity just like vaccine. And after recovery of natural infection, those who were unfortunate, they died. In their advisory on the 10th of May 2021, they said that almost 90 to 99% individuals are developing neutralizing antibodies after the natural infection, and it's providing equal protection. Even if providing equal protection, but they never said they do not need vaccination. You have a deeper understanding of social developments and the global dimension. You also say that the pandemic has exposed and exacerbated health inequalities. There are substantial differences in health across the country, which the pandemic has exacerbated. Can you also elaborate on this? So this health inequity plays on national level and global level. The best example is access to vaccine, the COVID vaccine. In some countries, they have, for example, Australia, about 90% of the people got access to vaccine, whereas in some countries, 4%, 5%. But the COVID pandemic, one case anywhere is a COVID case everywhere. So this is one of the manifestation of health inequity. So COVID pandemic that amplified that health inequity, particularly in the area of accessing vaccine. But in Indian context, it's a magnificent achievement that India reached about almost 116 crore
vaccination, and within the span 60%, yeah, 60%. Right. yeah, but that is within the span of less than 1 year. So that's from a public health point of view, that's a significant achievement. But from the COVID pandemic, that alone will help us, that we have to look at carefully. So I'll get into some of the analysis of that. Okay, we have a significant achievement when we look from a 2020 March to 2021, end of 21. So today we are much more prepared than 2020 March when the lockdown was declared. And we have a significant understanding about how the COVID pandemic works. And we have a significant investment in the area of diagnostics, treatment, and a significant number of doctors, they know how to deal with a COVID patient. This was not the case about a year and a half. So within the short span of time, we expanded magnificantly. You show this diet, that Japanese diet, sir. Yeah. So, and you showed the whole palette, if you see, it's spread of so many things, including just one portion of rice. And then there are other so many vegetables and everything spread out. Whereas if you look at the Indian palate, and particularly, so don't you, because this has been one of the key points of discussions in the recent times, some studies also come, I think government also has been highlighting the overuse of carb-rich food, carb-rich food in our diet. If you see the plate and the picture of Indian diet, forget about the American burger and all those diet, chips and all. But even in Indian diet, sir, don't you think that the portion of rice, roti is much, much higher than vegetable and dal if you look at the overall plate? Whereas in Japanese or even in foreign countries, whenever we go in Europe or US or we travel and we eat at the restaurants, so we see that there's always a lot of emphasis in terms of the filling the plate with more vegetables and maybe beef or the chickens and everything, and less of bread or everything. Everywhere you start with some salad or some more rich veg. So is there any data available on this, that Indian diet Indians eat more carbohydrate compared to other countries? That's why that can be one of the reasons of imbalance in nutrition, sir. Yeah, you're perfectly right, Dr. Sadeep. Indian diets are high in cereals, and it's like rice and wheat, which are almost 60-70% they get the calories from carbohydrate. So there is, of course, these carbohydrates are not very desirable, as you said, if you are having excess of carbohydrates, but they are less harmful than very rapid carbohydrates like sugar, maida. So if you take, multigrain they take now, we combine it with bajra or wheat. They are also carbohydrates, but they do not have that sudden rise in blood sugar. Glycemic index is less, firstly. Secondly, as you said, the too much of rice, it is a matter of economics also. Poor people cannot afford too much of vegetables. Fruits are getting very costlier. So they cannot afford. So for them, the staple diet will be a bowl of rice or a big thali of rice. I have seen poor people eat it with some salt and water also, nothing else, because that they have to fill their year. But fortunately, what happens, the poor people, they are working more also. They are doing more physical activity. 6-7 घंटे वो काम करता है, तो उसका क्या होता है कि उसका कैलोरी इंटेक मैच हो जाता है. And awareness among the rich people, they can afford to have a variety of diets and cut down on carbohydrates. They can have fruits. They can have actually 5 helpings of fruits are recommended. Minimum 5 helpings, 35 gram in each helping. Almost this 5 helpings of fruits and lot of vegetables. So that gives a diversity. They say as much diversity in the diet and cutting down on the carbohydrate. Firstly, refined carbohydrate, and secondly, as you said, the other too much of rice, which can form the bulk of the year, can be unbalanced a little. But poor people cannot afford it. So we can have some consolation that they work it out. They do the physical activity, so the balance remains, and they can, if they are working in the fields, they may take some gajar or mooli or something. They take vegetables also. They may be munching, but that awareness can be increased. And the poor people can be told to grow their own vegetables, like kitchen garden, other things. So that way, it may be a matter of economics. On your recent statement
and that is one of the latest one is still in debate going on, is looking at the COVID-19 vaccination status and the natural infection. We can say that very soon the majority of us will be getting an infection, and thus this virus will convert into endemic, says Dr. Sanjay K. Rai, he told ANI in a statement. Then WHO came out with this statement, the COVID-19 pandemic is far from over. The World Health Organization chief said, cautioning against a narrative that the fast-spreading Omicron variant is risk-free, this pandemic is nowhere near over, said Tedros Adhanom Ghebreyesus told reporters from the WHO's headquarters in Geneva. Is it contradictory, or you both are pressing on the same point in different ways? ये गवर्न करता है कि हमारी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कितनी सस्टेन कर रही है. सो बेस्ड ऑन द करंट एविडेंसेस ये है कि वैक्सीन इज रिड्यूसिंग सिवियरिटी एंड डेथ, बट वाज अ वेनिंग ऑफ प्रोटेक्शन हो रहा है आफ्टर 6 months, यूजुअली आफ्टर 6 months. दैट्स व्हाई ऑल ओवर वर्ल्ड जो है दे हैव रिकमेंडेड बूस्टर, राइट. बट नेचुरल इन्फेक्शन के बाद अभी वेनिंग नहीं हो रहा है. सो सिवियरिटी एंड डेथ जो है नेचुरल इन्फेक्शन, द वे दिस ओमिक्रॉन इज इन्फेक्टिंग पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. फ्रांस जैसी छोटी कंट्री में रोज 5 लाख हो रहे हैं, 10 लाख यूएस में हो रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में मोर देन 30 लाख केसेस. सो द वे इट्स स्प्रेडिंग वेरी फास्ट स्प्रेड हो रहा है, तो ये लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल गेट इन्फेक्शन. एंड बेस्ड ऑन द करंट एविडेंसेस we can say that those who recovered from the COVID, they are the best protected person on this earth. इसको देख के लगता है कि tomorrow इन्फेक्शन में आकर कोई नया वेरिएंट आएगा, दिस इज RNA वायरस, म्यूटेशंस होते रहेंगे, बट इम्पैक्ट विल बी लो. सो अगर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहते, जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड अगर हो रहा है, सो दैट इज वेरी लाइकली कि ये जो है करेगा. एंड बेस्ड ऑन द करंट एविडेंसेस अगर देखो तो दिल्ली में इतनी डेथ्स नहीं हुई या कंट्री में नहीं हुई, क्योंकि when the second wave came in this country, हम जो है सिर्फ एप्पल को एप्पल से ये कर सकते हैं, एप्पल को जो ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते. सो ओमिक्रॉन का ओमिक्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं, एंड डेल्टा का डेल्टा से. डेथ रेट ओमिक्रॉन का यू कैन नॉट कंपेयर विद डेथ रेट ऑफ ये कि वहां उस समय 2% वैक्सीनेशन था, नाउ इट्स 70% वैक्सीनेशन. दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेक्टेड. जो एविडेंसेस थे ऑफ योर नेचुरल इन्फेक्शन का टिल नाउ कि बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. सो जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ है वह जो है लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन देगा, और तो ये प्रॉब्लम नहीं, सिवियरिटी एंड डेथ नहीं होगी. एंड दिस इज द मेन रीजन जो इस समय सिवियरिटी एंड डेथ कम हो रही है इस कंट्री में. दिस इज द मेन रीजन. वैक्सीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट उन्हें सटल पॉपुलेशन में तो इनका ऑब्सेशन है अबाउट द वैक्सीन. साइंस के प्रति ऑब्सेशन नहीं है, इट्स ऑब्सेशन फॉर द वैक्सीन ओनली. WHO का दैट्स व्हाई सेड कि यूज द एविडेंसेस. ठीक है, लास्ट ईयर व्हेन दिस वायरस लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड फ्रॉम द यूएस वन, दैट टाइम वी डिडंट हैव एनी एविडेंस, दैट वाज अ कंप्लीटली न्यू वायरस. तो उस समय स्पेकुलेशंस ठीक था. But even currently, if you are speculating everything at the cost of scientific evidences, so if you are ignoring scientific evidences, that means something is wrong somewhere. तो ये था मेरा कंसर्न, और कुछ नहीं था. Overall, we have seen in US, in European countries, now also seen in India, is about vaccine hesitancy. So how do you see this is impacting management of COVID-19, particularly when the new variant of concern, Omicron, seems to be spreading much faster than anticipated, and things are going out of gear, particularly what we see in South Africa, UK, Norway, and these countries? See, one is how do we communicate about COVID pandemic is a significant issue. And if you look at the British Medical Journal, or that day before yesterday's publication, Omicron is causing more infection but fewer hospital admission than Delta. So this is the data from South Africa. I say that there are more infection rate because one person can infect another 3%. And also in the laboratory condition, there are about 70% infection rate than the Delta. But at the same time, in the actual condition, we are noticing about 10% of the infection. So this is the lab test basis and the actual infection rate. There is a variation. One thing is very clear. We have the data says that the public health and social measures and also infection prevention control measures are actually working. So this is very, very clear about it.
And as a policy level, probably we had to look at our lockdown response, because we cannot lock down endlessly, because economic burden is so phenomenal. And I don't think that we can afford to take one more lockdown, because the economic resources are so much stretched. So we have to focus on the vaccine and dealing with the vaccine hesitancy, and also other preventive measures, the basic preventive measures like reducing the physical distance, and also avoiding the larger the crowding, looking at the ventilation or the confined settings, and also how you provide treatment for the people infected. And when you talk about vaccine hesitancy, the vaccine hesitancy is not only for the COVID pandemic. We have many other vaccines. We know that about 25 vaccines we are using. But the vaccine hesitancy, it comes on various forms, various reasons behind it. Dealing with the vaccine hesitancy should be as part of our prevention effort and also health communication. When you show the data of India, and I'll come back to India because we are here, so it makes more sense. Is the overweight in terms of the overall deaths per million population? You said overweight is, I think in the whole chart it shows the lowest, 19.7%. So can you clarify a bit more on this, that what does it actually imply that overweight is the lowest? It means that all the people who have died of COVID, the reason for obesity is the lowest compared to all other countries. That's what you mean, sir? I want to say that the population level obesity, actually these are data at the population level. So this gives the clues. Now we require the more study at individual levels, more granular studies to really establish it further. So these are the general clues given by population level data. Higher the obesity, higher the impact. And in fact, I have got people have contacted me from Brazil also when I had presented the data on one international forums, and one lady contacted me and she said, yes, most of the deaths, 80% of the deaths I am seeing in my hospitals are obese people. Similarly, people have contacted from USA, they say most of the children who died are obese or endocrine disorders or other disorders. So childhood diabetes and other things. So these are some clues at the population which gives the signals. And if we get the signals, we should follow that path and investigate further. Actually, now presently what is happening is vaccine is one of the measures of controlling or preventing disease, but it cannot be the sole measure. What is happening is everything is concentrated on vaccine research. So in addition to vaccine research, we should do this type of research also, because human body is not like a machine, like a factory that सबको एक ही type का gear लगा दो या सबको एक ही type का fuel लगा दो. Even for nutrition also, different people react differently to diets. So you have to do trial and error. So in this, obesity is coming out as an individual factor. Obese person or someone with vitamin D deficiency, the natural immunity also doesn't work, the vaccine also doesn't work. There are some studies. So one of the commonest thing what I've seen is particularly in the multi-vessel heart disease, where more than about 3 or more than 3 vessels are involved with a blockage in the heart, sir. So there's always, I've seen a conflict of opinion. A patient goes to a cardiac surgeon and cardiac surgeon says that I'll do the bypass surgery and it has become advanced and that is the only way to sort out. And there are certain cases where interventional cardiologists have seen that such can be handled with the proper professional angioplasty procedure also. So what is the difference? Where patients should know in multi-artery diseases that angioplasty is good, or of course is the call of the medical practitioner, but what patient should know about the benefit of bypass surgery over angioplasty and benefits of angioplasty over bypass surgery? A lot of people now, they are quite aware of, of the procedures. Those days are gone where the people didn't have knowledge, everybody checks with the internet and, taking second opinion, third, which is always very good. But my point is that we divide the treatment in 4. If I see one angio where I feel that it is the best for the patient to have an angioplasty, now this is the angioplasty. And there is one group of patients which I would say the bypass is preferred. And then come the mixture. There we see the pros and cons, and fourth, of course, the medical treatment. Now, if I have a young patient
and all the three arteries are blocked, And when I say young, say 40-year-old, 45, 50-year-old, I would prefer personally multiple vessel angioplasty. And if I have a patient at the age of 70, 68, I would prefer bypass because that's the best time for the patient to tolerate the surgery rather than doing the angioplasty and maybe, sometime when they become 78, 80, the surgery becomes relatively difficult. So we go by each patient. And then at the same time, if I have a patient coming from, say, my village or any village, where we find, patient will not be able to come for follow-up and so forth, and we want very, very long-term result. Bypass is always better for the long-term result. The people coming from the villages sometimes cannot afford, because these days the angioplasty, when we do the multiple vessels by using road ablators and so forth, becomes more expensive than the bypass. Welcome back. And I just want to remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. We now go on to the next segment, that is quiz number 4. Well, quiz number 4, the question is, which of the following are important components of the national health security? A, allocation of more funds to the annual health budget. B, capacity building and education of healthcare workers. C, use of technological intervention at various stages of the pandemic. And D, all the above. The answers will be given at the end of this show. Over to you, Kishore. थैंक यू सर। और अब वक्त है हेल्थ रेजोल्यूशंस का। देश के जाने माने डॉक्टरों और सेहत से जुड़े विशेषज्ञों ने नए साल में आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने का मंत्र दिया था। उनके संदेशों को हमने आपके समक्ष लाने का फैसला किया ताकि उनके विचारों से आप जान सके कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो प्रस्तुत है विशेषज्ञों के संदेश आपके लिए, हम सब के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ गुप्ता, PSRI हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। मैं आपको ये कहता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, साथ में अपने जो कहते हैं
मानसिक स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखिए। इसके लिए जरूरी है कि रात में आप सोने से पहले 1 घंटे मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिटैच होकर रहें और आपस में अपने परिवार से कम आधा घंटा, चाहे वो आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं और आपके बच्चे हैं, उनसे मिलकर वो समय स्पेंड करें। ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। Anyways, we are hearing a lot about the screen damage that is being done to an individual. And when it is a child, the neurons are anyway synapsing at a very, very high speed. So the screen is actually debilitating that neuronal connections, because of which there are deficits that are being seen. An absentia of social communication and more communication with the screen is definitely detrimental and should be avoided to the maximum. Screen time should be used in moderation. So we are saying that yes, screen is an important way of communicating in times of today, but it needs to be balanced out with other forms of communication. And again, as adults, I think we need to take the responsibility of this guidance. So for instance, if you are seeing that the child is not in a balanced or in a holistic way managing his life, which would mean, yes, he may be using screen for his online classes. So we can supplement it with doing something else for his extracurricular. So we don't need to put him onto a hobby which is also through the screen. We can put him onto some hobby, some play, some extracurricular which can be away from the screen. There can be some form of gaming that can be real-time gaming, because gaming also is a very, very screen-oriented process in times of today, because children don't have other ways of entertaining themselves. So if we can even use a playtime at home, which can be within the family, or it can be individually loaded to the child, with many individual games also that come about. You know, there are a lot of intelligent games, including simple ones like puzzles, like Sudoku, etc., which can be played individually. And there are other very simple games like Ludo, Snakes and Ladders, Scrabble, a lot of games like this. And in fact, there was a research which said that Ludo was one of the most sought after games online during the pandemic 2021. If we can translate a lot of this in real-time playtime, it would be very good. Allow the children to move out of the house, but with proper precautions. So have a balance so that, you know, we are able to socially connect with them, and there is a real-time communication happening, in which also as adults, I think we should give an active listening to our children. When our children want to speak, we should, one, start with open-ended questions, not in which there are monosyllabic answers that yes or no. For example, a lot of times we would ask, would you like to eat? So the answer would be yes or no. So engage in a conversation. What would you like to eat? This is a food pyramid. Explain to them, out of this food pyramid, this is what we can do, which would add a lot of immunity to ourselves. So engage in a conversation with your child. That would encourage him or her to engage back in a conversation with you. The conversations itself are becoming very, very limited, and thereby we are seeing communication deficits also develop. And yes, it has a direct correlation with autism spectrum as a diagnosis. I am Dr. Kadam Nagpal, a neurologist from PSRI Hospital. The message what I give for everyone, my patients with neurological disorders and the population at large, is to stay fit, keep safe, especially in the times of this third wave threat looming at large in front of us. We need to stay safe and simultaneously indulge in all kind of fitness activities like yoga, whatever we can do back at home in order to achieve a good state of mind and a proper health. Thank you. जब भी कोई चीज फायदे की होती है या कोई नई बात आती है तो हर कोई उस पर लैच ऑन करके उसको ट्रेंडिंग बना देता है. नाउ थैंक्स टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया सब उस पे डिस्कशन शुरू हो जाता है. कई बार वो लोग उसके बारे में बात करते हैं जिनको ज्यादा पता भी नहीं होता उसके बारे में, तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है. बट ऑफ कोर्स हमारे किचन्स एक सिंपल सा जो एक सबसे कॉमन फ्रेज है न्यूट्रिशन के बारे में वो ये है
eat your food as your medicine, और इसको हम अभी भी समझ नहीं पाए. अगर हमें खाने को अपनी दवा की तरह खाएं, that is all we need to stay healthy. फिर medicines की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये हम clinically कर रहे हैं. We are able to remove medicines from people's lives by changing their food. और उसमें spices and herbs एक बड़ा component होते हैं. So definitely वो सही बात है, but हाँ उसको किस तरह से यूज करें, इसके कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. जैसे कि हम लहसुन बोलते हैं जिसको गार्लिक. अगर आप लहसुन में एक एलिसिनिक कंपाउंड होता है जो कि एंटी कैंसर होता है, एंटी वायरल होता है, बट उसको अगर आप बहुत पका ले लहसुन को तो फिर वो डीनेचर हो जाता है. तो आइडियली हमें लहसुन को क्रश करके, जैसे हम पहले उसको चटनी में डालते थे या क्रश करके खाते थे जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाए एलिसिन, वैसे खाना चाहिए. तो वो छोटी छोटी जो हमारी कुकिंग टेक्निक्स की बारीकियां थी जो हमारे किचन में होता था, दैट वाज द राइट वे ऑफ ईटिंग आवर हर्ब्स एंड स्पाइसेस. ऐसा नहीं कि दूध की हल्दी ली और गर्म पानी में डाल के पी गए. दैट इज नॉट हाउ हल्दी वर्क्स. तो वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना जरूरी. नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल में. और बच्चों के लिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगी कि बच्चों में आप खान पान, उनकी फिजिकल एक्टिविटी का काफ़ी ख्याल रखें, क्योंकि कोविड टाइम में बच्चों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है लॉकडाउन के कारण. वो घर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है. तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना है. जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन अभी 15 साल से ऊपर बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा दी है, और आने वाले समय में मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएंगी. और जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है तब तक हमें अपने बच्चों को मास्क लगाने की संपूर्ण जानकारी देनी होगी, और उन सभी को हमें हैंड हाइजीन की भी लाभदायक जानकारी सारी बतानी होगी ताकि वो कोविड से सुरक्षित रहें. There's a lot of myth around inhalers and rotocaps and nebulizers. So let me bust all those myths today. Inhalers and nebulizers and rotocaps are just another way of delivering the drug, as you would do in terms of taking a tablet or a syrup or an injection. Just the way you're doing those, you're taking a medicine through these. So it's just a drug delivery device and nothing more than that. If you need a particular drug, this is the best way of delivering it into the lungs, because it is going straight in the lungs where it is supposed to be acting. So first of all, what you're giving is in micrograms, dosages. If I was to give you a tablet of the similar compound, I would probably give it to you in milligrams. Well, this is micrograms. Micrograms means it's 1/1,000th the dose. And it's directly reaching the site where it is supposed to act. You want the airways in the lungs to be opening up, and you're giving the medicine which is reaching directly the lungs where it is supposed to open up. So their side effects are minimal. Of course, every medicine that you give would have some side effects, but the side effects are minimal. The question that people become dependent on it is absolutely incorrect. We don't want to cause dependence, but we want patients to be on regular medication to keep their lungs healthy. What happens in our country is that for people with asthma and COPD, they take their medicines for a short while as long as the symptoms last, and then discontinue the medication, which results in a recurrence of the similar episode again after 3 months, 4 months, 6 months. Rather than taking the medicines regularly and completely obviating all those symptoms and all those exacerbation episodes, people believe in taking medicines only on an SOS basis. We have to consider COPD, bronchial asthma, all these kind of diseases also on the same lines as we do for diabetes, hypertension, cardiac diseases, where people continue to take medicines on a long-term basis. This is what they should be doing for COPD and asthma also. Consider it on the same lines and keep taking the medicines regularly. Hello friends, wishing you a good morning, good afternoon and good evening from all parts of the world. I am particularly taking care of patients who are diabetic, who are obese and who have high blood pressure and who have deep snoring problems, and we do many weight loss procedures including bariatric surgery for these patients.
Obese patients have been known to have poor outcomes in COVID times. कोविड ने ऐसे बहुत सारे मरीजों को जिनका की वजन ज़्यादा था उनमें ज़्यादा अत्यधिक सिवियरिटी वाली बीमारी हुई है। इसके चलते बहुत सारे लोग काफ़ी समय आईसीयू में रहे और हम चाहते हैं कि आप आगे स्वस्थ रहें तो अपने वजन का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें और अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद भी आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे तो ज़रूर हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर से मिलें और अपनी कंडीशन को डिस्कस करें कि उसके लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। All the patients, I strongly suggest that there's in the studies that have been recently documented and in our own data, 15 to 30% of the patients are affected by what we call as the post-COVID-19 syndrome. This can manifest in 5 ways. One is chest pain. Second is simple breathlessness. The third one is some level of palpitations and dizziness, what we call as syncope and pre-syncope. All these patients who are having these kind of symptoms are and must immediately go and visit the doctor because these are the patients who are having more chances of having an effect on the heart. But I suggest that all the patients, even if they are recovered, they must have a direct evaluation of the heart. And third thing is, all the patients who have suffered from moderate to severe COVID, 80 to 90% have underlying heart damage. So they should also have a baseline evaluation of the heart. In case the baseline evaluation yields some kind of dysfunction, my suggestion is that they should follow up their doctor every 6 months. But if the baseline evaluation of the heart shows a normal function, then probably a long-term or a routine follow-up of cardiac checkup is not needed in these patients. Yeah, next question is, COVID scare was a major factor in lesser hospitalization for heart failure and heart attacks. However, available data indicate now that significantly higher mortality due to these ailments than due to COVID. Your comments? Definitely. There is no doubt about it. Remember, what was happening in the COVID in India particularly was because of the lockdown, many of the seriously ill patients who are manifesting acute heart attack or who are having severe heart failure were unable to reach even their peripheral center. So the data that we actually have for causing the mortality is actually biased and actually not true. There were many patients who were dying because of the collateral damage that was happening. Remember, even today, the deaths because of COVID were significant. It was a high impact. But still the mortalities due to acute heart attack and heart failure were significantly high. Even our own hospital witnessed significant increase in presentations of the acute myocardial infarction. So it is very pertinent that while we are taking care of these illnesses, COVID is acting like and especially in those patients who are having comorbidities like diabetes, like hypertension, like obesity, all these patients are more likely to develop more severe complications like heart failure and also chances of an acute heart attack or acute myocardial infarction. So in case you have any of these symptoms, in case you have any kind of these problems, it is very pertinent to immediately report to the hospital. There is no doubt in the largest registry that we have conducted along with Cardiological Society of India, we have clearly documented the underreporting. Still, the myocardial infarctions and heart failure were significantly high in the COVID time. It was only because of the underreporting that we were not able to get the exact data. It is very important. COVID is a very severe disease. It can create such a level of immune damage, and if the immune response is triggered, it will practically destroy and lead to catastrophic complications both on the heart muscle as well as on the rhythms of the heart. I'm Dr. Neetu Jain. I'm Senior Consultant in Pulmonary Medicine and Intensive Care at PSRI Hospital. So as a pulmonologist, a chest doctor, I would tell you to be safe, follow hand hygiene, follow wearing a mask all the time and protect yourself from COVID, which is coming again for us. Second, then you have to protect your lung health by not smoking, by doing breathing exercise, adopting some yoga exercise, and keeping up with your medication and visiting your doctor in case you have any problem. तो अगर आपकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ती है
या फिर आपको लगता है कि ठीक हो रही है, दवाई बदलनी है, इस मौसम में जबकि कोविड भी बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चलना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाइए कि ये आपको छोड़ना है। ऐसे भी दिल्ली में और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, हम सबको एक्सपोजर है, उसके ऊपर स्मोकिंग करना आपके सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। तो अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो वी कैन अवॉइड द इन्फेक्शन, और वो इम्यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बॉडीज पावर टू फाइट द डिजीजेस। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो आहार और विहार है, कि जो हम खाना खाते हैं वहीं से सब चीज इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। अगर हम खाना प्रॉपर टाइम से खाएंगे, प्रॉपर मात्रा में खाएंगे और जो पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा हमारा खाना, तो उससे हमारे शरीर के जो दोष है, धातु हैं और मल है, जिनसे ये जो पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है वो साम्य अवस्था में रहेंगे। उनसे फिर हमको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और बॉडी जो इम्यूनिटी हम आयुर्वेद में उसको इन्फेक्शन से, नॉट इवन कोरोना, कोई भी इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। इवन जैसे आजकल अभी हमारे आगे के पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे कि इवन डेंगू इज मोर डेंजरस देन कोरोना, मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, तो उस सब से हम अपने को बचा सकते हैं। हमारा आहार के अलावा हमारा व्यवहार कैसा हो, हमको क्या डूज एंड डोंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, ये डिजीज का प्रेवलेंस हमने देखा है कि फरवरी मार्च में ज़्यादा क्यों होता है, कोरोना जैसे आपने देखा है। तो ये हमारी जो ऋतुएं होती हैं, वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव 6 सीजन वेरिएशन। और जगह तो ठंडी ठंडी होती है, विदेश में आपने देखा है 2 सीजन होते हैं, हमारे 6 सीजन होते हैं। आयुर्वेद ने बताया कि 6 ऋतु होती हैं। तो उन ऋतुओं के हर ऋतु के अनुसार, हर ऋतु में जैसे 12 महीने होते हैं तो 2-2 महीने की ये ऋतुएं होती हैं, और उन सब ऋतुओं का आयुर्वेद में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा खाना खाना है, कैसा पानी पीना है, उन सब का ध्यान रखा गया है। तो अब अगर हम उनका पालन करेंगे, उनको हम फॉलो करेंगे, तो हम किसी भी डिजीज को आने से रोक सकते हैं, वो बच्चों में हो, एडल्ट्स में हो या ओल्ड एज में हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो हमारे जो आयुर्वेद लोग कहते हैं कि 5000 साल पढ़ना है, 5000 साल पढ़ने जब से सृष्टि का, जब से मैनकाइंड धरती सृष्टि का निर्माण हुआ तब से आयुर्वेद है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। और अभी पीछे कोरोना काल में हमने देखा है कि आयुर्वेद इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मिनिस्ट्री ने तमाम फ्रंट वायरस को डिफरेंट आयुष कार्ड, आयुष 64 ये सब चीजें दी, तो उस सब लोगों ने प्रिवेंशन में अच्छा काम किया। जो फ्रंट लाइन काम करे तो इन्फेक्टेड नहीं हुए। वैक्सीन तो इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन डेवलप को लेना चाहिए, वो डिनाई नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का इम्पोर्टेंट रोल है इन्फेक्शन को, किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। Hello everyone, I am Dr. Vinita Singh Tandon and I am working as a consultant in internal medicine in Pushpavati Singhania Hospital and Research Institute. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं। हम सभी लोगों ने कोविड को फेस किया है और हमारे डेली रूटीन्स में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस, एट द सेम टाइम काफ़ी चेंजेस हम लोगों को लाने पड़े हैं। Most of the people have lost their dear ones also. First of all, we should be thankful that we are safe, we are blessed to be safe, and at the same time we should be extending our condolences to all those families जिन्होंने अपने near and dear ones को इन पिछले 2 सालों में खोया है। At the same time, I would also like to convey this message: if we continue following the appropriate behavior as we were doing in 2021, COVID-19 अभी तक गया नहीं है। We are also hearing that a new variant of concern is there, which is Omicron. Generally, Omicron के जो symptoms हैं वो mild अभी तक माने जा रहे हैं, but इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने guards को let down कर दें, and we should be not wearing the mask, we should be attending large gatherings, we should be attending parties. Better option would be that we follow the appropriate behavior like we were doing it, follow distances, and also wearing masks and hand sanitization regularly should be done.
कोविड इरा से पहले हम दो तरह के मास्क बोलते थे। एक सर्जिकल मास्क होता था सिंपल, जो सर्जरी के दौरान या मेडिकल हेल्थ पर्सनल यूज करते हैं, और एक N95 जिसे रेस्पिरेटर बोलते हैं, रादर मास्क नहीं बोलते, रेस्पिरेटर बोलते हैं। एक N95, N99 इस तरह के चलते थे। लेकिन जब से कोविड टाइम आया है तो जो उसकी, अब मैं आपको थोड़ा मास्क में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। एक मास्क जो इन्फेक्शन को रोकता है, जो सर्जिकल मास्क होता है, और एक रेस्पिरेटर होता है। एक जो कोविड टाइम है, क्योंकि इतना ज्यादा हर आदमी को जो थी जहाँ इन्फेक्शन के चांसेस होते थे, तो एक कॉटन का जो मास्क, सिंपल मास्क है, 3 लेयर मास्क, उसको प्रमोट किया गया। वो जो मास्क है वो एक इन्फेक्शन को रोकने में, आपका बीमार है, आपकी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसको रोकने में कामयाब है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके लिए जो रेस्पिरेटर होते हैं, रेस्पिरेटर कामयाब होते हैं। और रेस्पिरेटर में भी दो तरह की चीज होती है, एक उसमें जिसमें वॉल्ट होता है, एक वेंट लगा होता है जिसे विंडो बोलते हैं, और एक नॉन विंडो वाला होता है। अगर विंडो वाला यूज करेंगे तो वो आपको कोविड इन्फेक्शन के लिए कामयाब नहीं है, क्योंकि आप उसमें इनहेल तो आप जो पॉल्यूशन फ्री या इन्फेक्शन फ्री एयर है आप इनहेल कर रहे हैं उसको, लेकिन एक्सहेल करते हैं तो जो आपका इन्फेक्शन वाला हो सकता है तो वेंट के थ्रू जा सकता है। तो रिकमेंड ये है पॉल्यूशन में कि आप नॉन वेंट और नॉर्मल सर्जिकल, और इन्फेक्शन के लिए जो कॉटन मास्क है, कॉटन मास्क उसके लिए जो वार्ड लेवल पर, मतलब आपको जो मास्क लेवल पहनना है, कम्युनिटी में आप जा रहे हैं, अब वो रिकमेंडेड हेल्थ सेक्टर में नहीं है। कॉटन मास्क अगर आप पहनेंगे, या अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं या आप इन्फेक्शियस पेशेंट हैं, उसके लिए रिकमेंड नहीं है। लेकिन हाँ, एज ए कम्युनिटी पे या इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, वहाँ पे आप कॉटन मास्क यूज करें। अगर मान लीजिए पोल्यूशन के लिए करना है तो आप N95 यूज करें, और नॉर्मल हॉस्पिटल सेटिंग्स में करना है या हेल्थ प्रोफेशनल करना है तो सर्जिकल। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, कार्डियक सर्जन। मैं PSRI हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट क्यों है। हेल्दी लाइफस्टाइल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे कई चीज़ें एक साथ कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे आपके हार्ट के डिजीज़ हो गए, डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ओबेसिटी हुआ और स्ट्रेस हुआ। तो अगर आप ये सब चीज़ें एक साथ ठीक करना चाहते हैं, इसके अलावा लिवर, किडनी डिसऑर्डर सब कुछ ठीक हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करें। आजकल कहते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, इसलिए जितना कम बैठें उतना अच्छा है, जितना एक्सरसाइज करें रेगुलरली बहुत अच्छा है। स्मोकिंग अवॉइड करें, बिल्कुल ना करें। एल्कोहल अवॉइड करें। अच्छा न्यूट्रिशियस घर का बना हुआ खाना खाएं। बैलेंस डाइट लें। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। So remember, home isolation is the key, and Government of India has got excellent guidelines now on home isolation. And only for people who are elderly, above 60, with hypertension, diabetes, heart, chronic liver, lung disease, kidney disease, cerebrovascular disease, will only be there if the doctor feels they should be home. Otherwise, home isolation is still the key. Isolate yourself in a well-ventilated room. Try to use the proper triple-layered mask. Discard mask after 8 hours. Cut out the mask. If there's a caregiver, use N95. Rest and hydrate. Sleep for a good 8 hours. Maintain some respiratory etiquette. Do not share your personal belongings. And keep monitoring your temperature and saturation. You must take your medicines for comorbidities. You must do teleconsultation. If symptomatic management of fever, running nose and cough is warranted, do warm water gargles and steam inhalation. Paracetamol 650 milligram 4 times a day. Do not get misinformation by social media. And I think I congratulate Heal Foundation for last 20 years. Swadeep, Shankar and your whole team. Swadeep, you have been doing excellent service to humanity in general and Indian community in general, because you have given the right information. Because there is no need to panic, to do unnecessary tests and treatments. Do not rush for self-medication, blood test or X-ray or CT scan unless your doctor feels it is needed. Steroids are not indicated for mild disease. It should not be self-administered. And treatment should be monitored, for each individual is different. So it's very, very important to recognize that who should we admit. This is the most important slide. Okay, if somebody has difficulty in breathing, somebody has high temperature for more than 100 degrees for 3 days, somebody's saturation is dropping down below 93%, at least 3 readings within 1 hour, or the respiratory rate, person is breathless, more than 24. There is persistent pain or pressure on the chest. Person is confused or person cannot be aroused.
there is severe fatigue and myalgia. If any of these 6 conditions are there, please admit the patient. There is no harm, because these are the people who need admission. Every life matters. When to discontinue? Probably, we know now that if a person is asymptomatic for 3 days, no fever, okay, you can release them from self-isolation after 7 days. So there has been a lot of changes in the guidelines, in the discharge policies for mild cases. But if there are moderate cases or severe cases, the old dictum still stands. And obviously there are excellent guidelines now for turnaround time for healthcare workers and so on and so forth. Resilience is very nice, that we spring back. If you saw the Diwali festivals both the years, resilience is very good that we are getting back to work. The trouble is, if the resilience becomes carefreeness, because the danger is not over yet, scientifically, epidemiology will tell us. And so, like we said in the previous episode, to repeat very briefly, fear, apprehension, whatever traumatic experience needs to be channelized to being responsible. We need to be responsibly behaving. What all will it include? 1, healthy diet and food habits. 2, physical activity, appropriate physical activity. I'll come back to that in terms of COVID positive recovering person. But appropriate physical activity. Avoid or reduce tobacco and alcohol. Most importantly, remain psychologically as positive and well as you can. But I went through a COVID positive state. And I can tell you, science tells us, and I can tell you from experience, for 3 to 4 months, that is the experience of long COVID. There are different terms being used. There will be physical anergia, there may be lack of will, there may be those combined psychological and physical symptoms, at least for a few months. And I do believe, individually, clinically, and I think science is beginning to emerge, some, at least if not more than some of the unexplained sudden cardiac deaths in people after they became positive and recovered is because people were trying to get back to physical exercise of the previous level. And that is being one danger. That's never good. So you need to get back to physical activity in a very graded manner. People who are COVID positive and who have any comorbidity, obviously be very, very careful. There is no end to caution there. But most importantly, as we refer to persons with mental illness, how do PMIs with COVID positive state rehabilitate themselves, or how do family or clinical teams help them? People with long-standing mental illnesses who already had and who are on treatment, when they had COVID, there was a different set of problems. Now, how do you handle their rehab? People who developed syndromal, significant depression, anxiety, or stress syndrome because of COVID, who were not suffering from mental illness earlier, but who developed mental illness during the COVID period, how do they rehabilitate? Less of medicines, more of counseling and psychosocial support, more of healthy lifestyle, but monitoring that recurrence is possible. Let's remember that for people with pre-existing mental illness or people who develop new disorder, with the continuing threat and all the social hype that goes on, recurrences and relapses are common. And so the first thing we need to be aware of is to make sure that we pick up people who are in need of help. Welcome back. Welcome back. We now have quiz number 5.
Let's have the quiz number 5. Edmund, can we have quiz number 5, please? Well, sorry for the delay. The question number 5. The question is, which of the following New Year resolutions have been recommended by experts for a safe and healthy New Year 2022? A, mindful eating. B, inculcate a habit of exercising regularly for at least 30 minutes a day. C, avoid sitting for long hours and move around every 30 minutes. D, all the above. Now we move on to answers to all the 5 quiz that we had asked earlier. Quiz number 1 was, the question was, which of the following regarding yoga is correct? We had a series of questions and the right answer is all the above. That is all A, B, C. Answer to quiz number 2, the question was, which of the following is non-appropriate behavior in times of COVID? And the correct answer is B, circulating social media posts without verifying the credibility of the source. Quiz number 3, the question was, question number 3 was, which of the following is true concerning changing food habits during the pandemic? And the correct answer is all the above, that is A, B, and C. Quiz number 4, the question was, which of the following are important components of the national health security? And the correct answer again is D, all the above, that is A, B, and C. Quiz number 5, the question was, which of the following New Year resolutions have been recommended by experts for a safe and healthy New Year 2022? The options varied mindfully, inculcate a habit of exercising regularly, avoid sitting for long hours, and the correct answer is all the above. Well, over to you, Kishore. थैंक यू सर। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे 27 फरवरी को सुबह 8 बजे, जिसमें हम वैक्सीनेशन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पहेली है क्या। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।